ambitious teams and one exciting contest, and another chapter awaits in this promising rivalry. It's Pakistan under-19 women's versus South Africa under-19 women's. The game 2 is ready to begin. Right then, it's been absolutely great to be here in this iconic National Bank Stadium where South African girls are taking on Pakistani girls under-19 series. This, for the first time ever, South African young girls are visiting Pakistan, and in the first match they've been absolutely amazing. This is the second of the 5 T20 matches. Pakistan versus South Africa from the National Bank Stadium, Karachi. It's a great initiative by the PCB for these young girls at this level. And here we have the schedule. The first match was played on 14th, and that was won by 4 wickets by South Africa. The second match, of course, is today, and the third match is on Sunday 19th, and the fourth match will be played on 22nd of this month, and Friday 24th we will be witnessing the final of this bilateral T20 series between Pakistan under-19 and South African under-19. Looked pretty confident, the South African side in the first game, shown a lot of character, a lot of resilience, and on the other hand, the expectations are quite high for the home side to make a comeback, and Pakistan are known to make comebacks, and we are expecting them. And it's time to go downstairs where the captains talked before the match, both of the captains. इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 8 महीने से तकरीबन इस पे काम करना शुरू किया हुआ है हम बेसिकली हमारा मेन फोकस जो वर्ल्ड कप का है वो है और उसके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडवांटेज मिला कि हमें होम सीरीज़ मिली है कि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें सबकी ज़ाहिर ख्वाहिश होती है कि वो सीरीज़ जीतें या अच्छा खेलें एटलीस्ट और बस हमारी भी वही कोशिश है कि इंशाल्लाह अच्छी गेम खेलेंगे एंड वी आर gonna win, inshallah. Mieke from Voorst, the South African under-19 captain. We as a squad are extremely excited for this bilateral series in Pakistan. It's our first time traveling here. The group is very excited, and I think the girls are ready to learn about the experience and experience different pitches in the subcontinent ahead of World Cup. So both the captains looked very excited to be a part of this T20 International Series, but let's see how the pitch is going to behave in today's game, and let's head down towards Ali Yunus, who's out there at the pitch. Yes, all set for the second T20 between Pakistan and South African girls, and the weather here in Karachi is absolutely beautiful. The wind is quite heavy, so the batters must keep that in mind to use that wind to their effect, because that will help them clear this 45-meter boundary that we have here in Karachi. Sorry, it's 55-meter boundary here in Karachi. Now looking at the surface, looks beautiful. It's as good as the weather in Karachi. It's very firm. It's when I go down, it's very hard also, so the ball will come nicely onto the bat, and the way South African new ball bowlers use this surface to their effect, I think that's going to help them a lot. Overall, a very good surface. The ball will come nicely onto the bat. If you're smart enough as a bowler, just use that weather, this wind to their best, because there are chances that the ball will seam around, especially it's a 7 p.m. start. So overall, it has something for everyone. The ball might grip in the second inning also. A very good surface, something for everyone. Right then, another beautiful evening here in Karachi as we see the beautiful pictures, and the temperature is 30 degrees, whereas the wind speed is 19 miles per hour. So always windy, always fresh here in Karachi, especially the evening, and the pitch was absolutely looking like a cracker. Now it's time to go downstairs, where a little while ago toss happens. Let's go and watch the toss. All right, so another pleasant day here in the National Stadium here in Karachi as we get all set for the second match of University of Lahore presents Rewaj T20 International Series between Pakistan Women's Under-19 and the South African Women Under-19 team.
We are all set for the toss of the second match of this 5-match series. I've got both the captains with me. Fizza Fiaz leading Pakistan Women U19 and Mieke Voorst will be leading the visitors. And we have got our very own match referee, Mr. Kamran Chaudhary. Fizza, you're the home team, so you're going to be flipping the coin. Heads is the call from Mieke. Heads it is. And heads it is. So the visitors have won the toss. Mieke, what are you going to do and why? We're going to have a ball first. I think just with the weather conditions and it worked well in the previous game. Give our bowlers some freedom to try a few things. You understood the conditions very well in the previous match, both with the bat as well as with the ball, but the opposition did come closer of the match. So how do you plan on to tackle the challenge today? I think obviously it's a new day. Anything can happen, but the goals are ready. All right, so are there any changes in the playing 11 today? There's one change. Van Rensburg comes in for Boshoff. All right, Mieke, all the best for today's Thank game. you. Fizza, टॉस नहीं जीत सकेंगे, लेकिन अगर आप जीती तो आपका क्या फैसला होता? जी हम भी बैटिंग पे ही जाते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा टारगेट दें और इंशाल्लाह फिर उनको जल्दी आउट करें. पिछले मैच में आगाज़ अच्छा ना हुआ, लेकिन उसके बाद मौके आपको मिले और अच्छा कमबैक किया बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो पॉजिटिव्स काफ़ी लिए होंगे पिछले मैच के नतीजे से. जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि पहले हमारा अर्ली कोलैप्स हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी है. ऐसी बॉलिंग में भी एक बार अच्छा उनका स्टार्ट हो गया था, उसके बाद उन्होंने हमने अच्छा कमबैक किया. बाकी इंशाल्लाह दिस इज पार्ट ऑफ गेम, तो आगे होप फॉर द बेस्ट. आज कॉम्बिनेशन में कोई चेंजेस हैं प्लेइंग 11 में? जी महनूर इज इन और मेमूना इज ऑन रेस्ट. All the best, Fizza, for today's game. Thank you. All right, so that's the news from the center. The visitors have won the toss, and the South African Women U19 team have decided that they are going to bowl first. Right then, South African Women U19 side winning the toss and opting to bowl first. It's an amazing decision because this is what they've achieved in the first game. Bowling first was very fruitful for them, and this is what their captain Mieke Voorst was saying at the toss. Beautiful conditions and a cool breeze is blowing across the field, as you can expect here in Karachi. And this is the South African side. Mankwawa, Mackay the captain, Winter, Jai, Murray, Mia, Wenwick, Deputy, Danley, Melissa, Mabasa. These are the playing girls for South Africa for today's match. They made one change today, the visitors, because they had obviously a lot of players having some issues. And if you look at the Pakistan's team, they consist of their regular openers, which played the previous match. They made a couple of changes from their combination in the previous matches, as we were told by Fizza Fiaz, their skipper. And they were looking very confident that they will be learning from the mistakes that they committed in the previous match and will be looking to come and bounce back stronger. So South Africans had no hesitation in opting to bowl first. Obviously, looking at the conditions, it's quite windy, as Ali told us earlier on. The breeze is very thick and blowing very quickly. So they will be hoping to utilize the conditions as they did in the previous match. Remember, Pakistan couldn't even open their account and they lost 3 wickets in the first couple of overs. And then we saw a really good partnership between Aqsa and Zulfisha, who brought Pakistan team back into the contest, and then few fireworks towards the end by Sheher Bano, which allowed Pakistan to go past 100. So both the openers will be hoping that they can get off to a decent start today, even if they won't utilize a power play to a high extent, but even then making sure that they don't lose enough wickets early on and they provide that foundation so that the rest of the batters, the middle order and the lower order, can come in and they can utilize the start that they already will have from their openers. On the other hand, South Africans will be hoping that they can use the breeze to their effect, pick wickets early and put the Pakistan team right under the pressure. Yeah, it'll be interesting to see how they start the proceedings with this tall lass, Mia. She was very prolific with the ball in the first game, picked up a couple of quick wickets up front and really set the tone for her side, and they were absolutely all over Pakistan from the words go. And then it was kind of a repair work which was to be done. It was a good bit of partnership between Zulfisha and Aqsa, yielded 61 runs, but still at the end of the day those were not good enough to get Pakistan to something substantial. Komal is the... In the first over, she took 2 wickets on the trot. That was a great opening, a dream opening for any bowler at any level. And meanwhile, in the com box, I've been joined by
Ali Yunus coming all the way from Lahore. Good evening, Ali. Very good evening to you too, Hafiz Malik. A very pleasant evening here in Karachi. A bit of breeze here in Karachi. That's what we usually expect here in Karachi, especially the evenings. They get very cooler. It was very humid in the daytime when I landed here in Karachi today. But then as the time passes, it gets better and better. But at the moment, all eyes on the second T20I between Pakistan girls and South African girls. South African, of course, leading in the first game. Yeah, that's the beautiful scenes here in Karachi. It always is beautiful, isn't it? It is slightly overcast conditions, as you can expect, especially in the month of July here in Karachi. And it's quite taxing one as well, early in the doors for the batters. And the pitch, well, by the look of it, it looked like a belter, isn't it? And Komal and Rawal will start the batting for Pakistan as an opening batters. And it will be interesting to see how Komal Khan copes with the early little bit of swing what Mieke gets. It's going to be a challenge up front. Yeah, she didn't have an ideal outing in the previous game, Komal Khan. She's a very good player, a wicket-keeper batter. She's playing the domestic very regularly. The last time she played domestic, she was in the Fatma Sana's team. She did really well. Here's the first delivery. Back of length, there was a scoring opportunity. No movement whatsoever. Started off with a loosener, Mieke, unlike her. But Komal Khan, yeah, she did throw the kitchen sinks on that one, but no contact whatsoever. Yeah, I think the intentions are pretty clear. They're going to go after the bowling of South Africa. Remember, in the previous game, they scored 19 runs in the power play. They lost 3 wickets, and those 3 wickets they lost in the first 2 overs. And Mieke getting couple in the first over that she bowled in the previous game. So Pakistan openers might have that thing in their mind. Just take this time. That's a beautiful delivery. That corridor of uncertainty where the batters are unsure whether to go forward or back. And with that kind of height she has, she's almost 6 feet tall. So she's going to get that extravagant bounce, that steep bounce. Have a look at that again. Yeah, because there is hardness in the surface. So if you bang it in, you can extract that bounce out of the surface. And as you rightly mentioned, the height advantage surely is with the back of length, width provided, slashed it in. Oh, and the fielder at short third makes a mess of it. And a boundary. Pakistan opened their account in the second T20. Yeah, sometimes you do need some luck. Pakistan openers, they didn't do anything in the previous game, but this, they will like it. You could tell in the dugout there was this celebrations because there must have been some nerves from the previous game. The length, that's not the length that we expect from her. And the fielder helping Pakistan scores. Just overran it, could not really get to that bounce, and then awkward ones taking it away from her. That's the channel. This is where she should be operating more often than not. It's a very good initiative, Ali, by PCB to provide these young girls with that particular platform and being televised these matches, these bilateral series. Earlier, Pakistan Under-19 women touring Bangladesh, and they've won that series 3-2, 5-match series. Again, outside the office stump, just dabs it away for a single. Komal is just looking better than she was in the previous game. Yeah, umpire just having a word with her. Be careful with that running between the wickets. You shouldn't be running right where the danger area is. So probably just having a word with her very politely. Maybe a warning in that politeness. Just be careful with that. And as you said, it's such a great opportunity for these young girls. Oh, was a little nick and didn't carry to the keeper. Well, there is something for sure early in the days. But the first over was action-packed,
5 without loss of wicket, Pakistan. When Wake, she also took a wicket in her very first over, ended up taking a 3-for in the previous game, was pick of the bowlers, Ashley Wenwick. Yeah, very impressive she was in the previous game. She bowled first two overs, in fact, they were maiden. And the control she bowls at is just amazing. A loopy delivery to start, a bit of fumble at short cover, but no damage done. Wisely sends her partner back because never run off a misfield, they always say, don't they, Ali? Yeah, and there was no run available anyways. They're all very close to the batters, especially inside the circle. They're all looking to stop run. There's a slip in place, that's a good sign. Starting off with the full toss. Previous game she had a great control. This one again shorter in length. She's been bowled just for one. So just these runs will ease up the nerves in Pakistan dugout, because in the previous game they were none for 3 and still recovered well. But if the opportunity is there for somebody like Ravel and Komal, you got to take that opportunity with both hands. Yeah, it's good to see she's operating with a slip at about second slip position. That's a good delivery. Just a little bit of turn, hint of turn. So she's operating with the new ball. It's going to be imperative which length she will be persistent to operate on. Another good delivery. Played it late, very late. You have to be careful. Yeah, I'm pretty much sure that there will be nerves. This is Mohammad Masroor, the head coach for Pakistan under-19 girls. He's done a good job. He's been around for a while. I've seen him work with even PSL franchise, Pakistan domestic sides. Very, very experienced. A right man to have with these young girls. Yeah, absolutely. Vastly experienced as a coach, level 3 qualified coach. He's been with Pakistan Shaheens, Pakistan under-19, with the boys, Pakistan under-16. It's a good delivery and safely negotiated. 2 done, it's 6 without loss of wicket, Pakistan. Right then, Ashley Wenwick bowling an economical over, just conceding 1 run. Mia continues. Was there a nick? She had a go at that one. A width was there. And now you would have noticed early that the bounce is not consistent, to be fair, because at times I've seen the ball keeping low. The last ball of the very first over and this one, the previous delivery. Have a look at that. Yeah, when I saw the pitch, I thought it has got a good bounce, but on this occasion, probably there are a few cracks that maybe the ball hits it, it keeps low. Got away straight to back with a point, no run there. Couldn't pierce the field. It's a packed offside field. And they've plenty of girls on the onside as well. Mid-wicket, cow corner. This is the offside field then. Back with a point, covers, extra cover, mid-off. And a slip in place as well. That's a good delivery. That's the channel. Wicket to wicket.
Yeah, she was doing a bit of experiment in the first over with the length, but I believe she should be sticking to this length because she was successful in the previous game with a similar sort of length. Got a couple of wickets in the first over. That was a dream start for somebody like me, like Mia, a very young girl looking to impress. World Cup coming next. Got to have your rhythm. Oh, that is a slog, and that is plenty of airtime on it, and it's landed beyond the boundary for the first maximum, and it's by the bat of Komal. She looked very good in executing that stroke. Very impressive. She just was waiting for that length that she likes it, and that was there to be hit. She was waiting for it, and she was very confident in hitting that. You just can tell by the way she's standing and the approach she has. Very confident, eyes wide open. It was right there in her slot. Bang, that's beautiful. Clarity. Change of angle by the bowler Mia. Just trying to use the angle. The right armer taking the ball across the right hander. The previous six you were talking about, the eyes just lit up when she saw the opportunity. Take a look at that in the replay. That's the six she struck a ball before, and that one went a long, long way. Respect given to that line and length. Good comeback by Mia after getting hit for six. And that's the end of the over number 3. 12 without loss of wicket, Pakistan. Ashley Wenwick will continue, still no change in the bowling. Flighted delivery and lofted over mid-on, one bounce into the boundary. This time Rawal joins the party. Yeah, that's excellent batting. Against the spin, against the wind. It's an excellent shot to play. He looks very confident. Things are different this time. Have a look at this. Just waited for it. It was right in her zone, right pitched up. A great swing off the bat. Change of angle, attempted a sweep. Not happy with herself. She was absolutely livid with herself because she was just sensing an opportunity, a scoring opportunity down the leg side. It was wide. Change of angle again. Yeah, Zufisha played really well in the previous game. But this already is a very good start from Pakistan girls. And I wonder how these young South African girls would react to this, because in the previous game it was all good, all happiness, getting 3 wickets in the first 2 overs. But now, knowing that Pakistan has got power hitters down the order, this start will do wonders for them. Well, this is the start actually Pakistan needed, especially when they were low in confidence after the first match. And this comeback game is very important for these Pakistani young girls. Off the back foot, played it late, can't get it past that fielder at backward point or gully sort of region. Yeah, at least these 2 batters of Pakistan, they're making South Africa think differently. We saw in the previous over the fast bowler straight away came round the wicket after being hit for a 6. Here Van Wyk also choosing to come round the wicket. Another shot in the air and just about manages to clear mid-on into the boundary. Well, she was floating with danger in that stroke, but in the end just takes another boundary. Rawal. Yeah, she looks good. She's a brave batter. These are not easy shots that she has attempted, and successful ones in both occasions. This one again, the length right in her zone. And she was brave enough to play it over that mid-on fielder inside the circle. Great balance also.
Well, the idea was right by Ravel on that occasion. Never try to keep it down. And if you go for it, then go hard at it. This is what they say. Even if you don't get in the middle of the bat, still you're going to get something, especially in the power play with the field restrictions. 4 done, Pakistan 21 for none. DTP is into the attack. First bowling change by the South African captain. She's an off-break bowler. It was very impressive in the first game. Ali, you have covered a lot of women's cricket. What positives you noticed at this level in particular with the under-19 girls? Played away, swept away. There is a protection, will be only one. Yeah, first thing is that these series is happening, regular occasions. You just mentioned about Bangladesh, Pakistan played a series against them, and now South Africa were the number 2 at this level. They were the runners-up in the previous World Cup, so they are a quality side. So Pakistan team playing against a bigger opponent, quality opponent, that will do wonders for them. Other thing that I really like is the coaching staff. They're very experienced coaching staff being involved with them at this young age. You mentioned about Masroor. There is Shoaib Khan, also the batting coach. That is driven with a lot of force behind it. And the outfield is very fast here in Karachi. Another boundary to Ravel. Nicely played. Just planted her front foot towards the pitch of the ball and driven it nicely. Good looking shot. Yeah, probably the best that she has played. Great shot, great eye. Again, the length right in her slot. And she's not scared. She's very brave. Great balance also, played it through the gap for 4. Beautiful batting. Will be one there. Well, you were talking about the coaching staff at Pakistan. Same goes with the visitors, South Africans as well. Their coach, Danisha Dinarayan, just was talking before this series started that this is going to be a very good preparation and for our girls to get accustomed to the conditions, the subcontinental conditions, because the next World Cup is going to happen in Nepal and Bangladesh. So pretty much the same conditions to Pakistan. That 5 bowled, 27 without loss of wicket. And with that, we are going to have a change in the voices. To tell you more about it, it's going to be Rana Ashfaq alongside Zishan Khalid. बहुत शुक्रिया एफएस मलिक और अली यूनुस। 27 रन्स बने हैं 5 ओवर्स के बाद। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकन गर्ल्स ने आज फील्डिंग का फैसला किया है। गो कि फील्डिंग उन्होंने उस इवनिंग भी की थी जब पहला मुकाबला खेला गया था, मगर वहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीता था और आगाज़ में भी फ़र्क है। पाकिस्तान वर 19 for 3 इन द फर्स्ट T20, मगर यहाँ 27 रन्स है। एक और बड़ी खुशगवार शाम है कराची में। अभी अभी गुरूब आफ्ताब हुआ है कराची में। 6ठे ओवर का आगाज़ जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर है। फर्स्ट वन इज प्लेड बैक टुवर्ड्स द बॉलर और इस तरह 6ठे ओवर में 27 रन है। जिशान खालिद ने मुझे ज्वाइन कर रखा है। जिशान, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। एक बेहतरीन आगाज़ पाकिस्तान अंडर-19 वुमेंस टीम का। मुबासा का ये पहला ओवर, विकेट मिली और कट करने में कामयाब हुई और बीट करने में भी कामयाब हुई फील्डर को और गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, ग्राउंड के मगरबी हिस्से में बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन अंदाज से इस गेंद की लाइन और लेंथ को जज किया यहाँ बैटर ने और इंतज़ार किया गेंद को नज़दीक आने के और फिर उसके बाद इसका शानदार कट शॉट खेल के गैप तलाश करने में भी कामयाब हुई। गोया कोशिश शानदार थी फील्डर की, अपने बाएं जानिब डाइव की, लेकिन उसके बावजूद गेंद को रोकने से कासिर रहीं और एक और 4 रन मिले यहाँ पाकिस्तान टीम को।
मबासा जो कि विद द विंड बॉलिंग कर रही हैं, ग्राउंड के जनूबी हिस्से की जानिब से शुमाली हिस्से की जानिब इस वक्त हवा चल रही है, या यूँ कहना चाहिए कि शमाल मगरबी जनूब मगरबी हिस्से से शमाल मशरकी हिस्से की जानिब इस वक्त विंड है, और जैसे कहना चाहिए शी इज़ बॉलिंग विद द विंड और विद द विंड और इनटू द विंड। बॉलिंग करने का भी कहीं ना कहीं तजुर्बा होता है कुछ स्पेसिफिक बॉलर्स को, और वो उसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं। जोरदार शॉट और गेंद वाइड मिड विकेट या काउ कॉर्नर पे गए, बाउंड्री से बाहर। एतमाद झलकता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम के बैटर्स की। अगर परफॉर्मेंस को देखें पिछले मैच का, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, कुल मिला के सिर्फ एक ही छक्का लगा था उनके मुकर्रर 20 ओवर्स में, लेकिन आज देखें तो ज़्यादातर रन्स बाउंड्री के जरिए हासिल किए हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हमको देखने को मिले। कुछ इम्प्रोवाइज भी किया, कदमों का इस्तेमाल भी किया, और ये शॉट अगर आप देखें तो उनको अंदाज़ा था कि डीप मिड विकेट के फील्डर काफ़ी स्क्वायर मौजूद थी और मिड ऑन दायरे के अंदर थी, तो इस पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए काउ कॉर्नर बाउंड्री को क्लियर करके मज़ीद 6 रन्स हासिल किए। बिल्कुल जिशान, बड़ा पुरएतमाद आगाज़ है, और ख़ास तौर पे अगर हम मुआवजा करें इस वक्त मबासा के साथ उनकी साथी गुफ्तगू करती हुई शर्ट नंबर 11 में, ये जो कि टीम की कैप्टन हैं, और उन्होंने दाद भी दी, उनका कोई मसला नहीं, आपको एक चौका और छक्का लगाए, अपना दिल बड़ा करें, और ये एक अच्छे कैप्टन की, अच्छी कैप्टन की निशानी भी है। ऑफ स्टंप से बाहर, अंडरस्टैंडेबल था, बैक फुट पे इंतजार किया, शानदार बैटिंग जिशान, एक और चौका। क्या बिल्कुल अंदाज बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहा है आज दोनों ही बैटर्स का, और रवेल को अंदाजा था कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और बैकवर्ड पॉइंट की फील्डर भी दायरे के अंदर मौजूद थी, बल्ले का फेस ओपन किया, इसको गाइड किया, स्लाइस किया, क्योंकि शॉर्ट थर्ड बैंड पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। और अमूमन जब आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, क्योंकि लाइटनिंग क्विक आउटफील्ड देखने को मिलती है नेशनल बैंक स्टेडियम की, और यहाँ पे मजीद 4 रन मिले पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल बड़ी लाइटनिंग फास्ट है आउटफील्ड, और ग्राउंड में ग्रीनरी भी मौजूद है। तामीर नौ के मराहिल से गुजर रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम। कवर्स में गेंद को खेली, दैट विल एंड दी पावर प्ले, और पावर प्ले में पाकिस्तान ने बगैर कोई नुकसान के 41 रन बनाए हैं। बड़ा अच्छा आगाज पाकिस्तान अंडर 19 विमेन का। अंपायर ने इशारा किया कि अब आप 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रख सकती हैं। ये पावर प्ले की सूरत हाल है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ मिली थी और मिसफील्ड के जरिए पहला चौका हासिल हुआ। फिर कुछ स्ट्रोक्स हमने देखे, ये मिड विकेट पे बड़ा खूबसूरत वैक था, ये मिड ऑन को क्लियर करने में कामयाब हुई थी। यहाँ पर फ्रंट फुट पे आकर बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ साइड में खेला, बैक फुट पे जाकर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेली थी। Then almighty swing on to the onside which cleared the cow corner. And then ये उनको पता था कि पिछली गेंद को उन्होंने आगे से लपेट के काव कॉर्नर पे मारा, ये मुझे पीछे टप्पा गिराएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया और चौका लगाया था। तो बड़ा अच्छा पावर प्ले को खेला है पाकिस्तान की दोनों ओपनर्स ने। कोमल जो कि 13 रन पर नॉट आउट हैं, रॉवेल ने 27 रन स्कोर किया, और जिशान बहुत अच्छा आगाज। मौका है अब पाकिस्तान के पास कि यहाँ से मजीद कुछ तेज रन बनाएं। बिल्कुल, दोनों ही एतबार से एक शानदार आगाज़ है, ना ही कोई विकेट गवाई है, और अगर आप रन बनाने की औसत भी देखें तो लगभग 7 तक पहुंच चुकी है, और यही मोमेंटम जारी रखें तो एक अच्छा हदफ देखने में कामयाब हो जाएंगी साउथ अफ्रीकन टीम को। जी हाँ, और अब फील्ड में जिस तरह हमने कहा कुछ रद्दबदल भी किए गए हैं। कंट्री साइड्स में स्क्वायर लेग भी है और साथ साथ मिड विकेट भी ऑन साइड पे, एंड देन लॉन्ग ऑन एज वेल। जबकि ऑफ साइड में यकीनन अभी भी पैक्ट है, कुछ खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। एक ही खिलाड़ी मैं देख रहा हूं जो कि स्वीपर कवर्स पर हैं ऑफ साइड में। और अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे भी हम नज़र डालें तो जिस अंदाज से उन्होंने आगाज़ किया था पिछले मैच में, अगर फास्ट बॉलर मिया का भी खास तौर पे जिक्र करें तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रेट विद इन द स्टंप्स गेंदबाजी की थी, जबकि आज उसके बिल्कुल बरक्स गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत वो काफ़ी महंगी साबित हुई। बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा, नॉन स्ट्राइकर थोड़ी आगे आ गई थी। डिथीपी ने फौरन ही अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोककर जो है वो उन्हें रन आउट करना चाहा।
अंपायर भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे डीटीपी के साथ। 133 प्रोजेक्टेड दिखाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान की गर्ल्स की ख्वाहिश इससे ज़्यादा की होगी। एक और अच्छी गेंद फुलर लेंथ की, बैट को तिरछा करके गाइड ज़रूर किया, मगर सीधा शॉट थर्ड के पास। ऑफ साइड पे अगर हम नज़र डालें तो ज़्यादातर फील्डर्स आपको दायरे के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के फील्डर को भी दायरे में रखा है। तो लाइन ऑफ अटैक इनका ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर ही ज़्यादा नज़र आता है, और अब तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की है इस ओवर में, 2 लगातार डॉट बॉल्स करा के। फ्लड लाइट्स पूरी तरह से इफेक्ट में आ रही हैं अभी नेशनल बैंक स्टेडियम में। सुनहरी मौका है इन नौजवान लड़कियों के लिए, पहली बार ऐसा मौका मिला है पीसीबी की जानिब से अंडर 19 लेवल की सीरीज इस तरह ब्रॉडकास्ट की जा रही है। मिसफील्ड हुई, जहाँ पे कोई रन नहीं होना चाहिए था वहाँ बआसानी एक रन हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म है इनके पास अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और स्पेशली फिर वर्ल्ड कप आया चाहता है। और मैं समझता हूँ इससे पहले बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ हुई अंडर 19 की, और अब साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रही है मेरा ख्याल जहाँ तक अंडर 19 टीम्स का ताल्लुक़ है वर्ल्ड में। ख्वाहिश थी बैटर की कॉमेडी की कि एक रन बनाया जाए, मगर फिर अपने आप को रोका। 7 हैव बीन बाउल्ड, 43 फॉर नन। अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं ज़ीशान, क्या लगता है विकेट स्लाइटली बेहतर है अगर हम बैटिंग के नुक्ते नज़र से अगर पिछले मैच से कंपेयर करें? एब्सोल्युटली राना, क्योंकि उस वक्त जब अली यूनुस भी पिच के नज़दीक मौजूद थे, वो भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि एक ऐसी पिच नज़र आती है जिसमें बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए मदद शामिल होगी, और जो कंडीशंस को अच्छा अंडरस्टैंड करेगा, उनको यूटिलाइज़ करेगा, वही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और अब तक हमने देखा है कि पाकिस्तानी बैटर्स ने रिस्क भी लिए, लेकिन उसके साथ साथ कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिए, कदमों का इस्तेमाल भी किया। तो ये देखते हुए कि जहाँ फील्डर दायरे के अंदर थे उनके ऊपर से खेल के बाउंड्रीज हासिल की, और शायद यही वजह है कि इतना अच्छा आगाज़ शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम आज उनसे। मलीसा अपना पहला ओवर लेकर तैयार हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, गुज़श्ता मैच में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, मगर यहाँ वाइड के साथ इन्होंने आगाज़ किया है। पाकिस्तान के पास अब बड़ा अच्छा मौका है, जब 13 ओवर्स खेलनी है उनकी 10 विकेट्स को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्डअप कर सकती हैं इस अच्छे फाउंडेशन पे। इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेल ले गई, स्ट्रेट और 1 थी। कुछ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन नज़र आता है अगर आप साउथ अफ्रीका वुमेंस अंडर 19 टीम का मवाजना करें इनकी मेंस टीम या इनकी रेगुलर वुमेंस टीम से, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादातर फास्ट बॉलर के शोबे में बॉलर नज़र आते हैं, जबकि हमने देखा है ज़्यादातर स्पिनर्स पे इन्हिसार किया अब तक विजिटिंग टीम ने। फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया, मलीसा ने अब तक बेहतर बॉलिंग की है, एक वाइड ज़रूर की, मगर बैट के साथ कोई रन्स उन्होंने कंसीड नहीं किए हैं। और राइट हैंडेड रॉवेल जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल रखी है, एट टाइम्स यकीनन स्ट्राइक रोटेशन भी आपको हेल्प आउट करती है, जब बाउंड्रीज बॉल आपको ना मिल रही हो, लूज बॉल, तो ये भी एक बेहतर तरीका है कि आप सिंगल्स भी जो हैं वो लें। एब्सोल्युटली, क्योंकि पावर प्ले के दौरान हमने देखा ज़्यादातर रन्स बाउंड्री के जरिए हासिल किए, जिसमें छक्के भी शामिल थे, चौके भी शामिल थे। लेकिन अब क्योंकि फील्ड स्प्रेड है और ज़्यादातर फील्डर्स दायरे के बाहर हैं, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे भी इन्हिसार करना होगा दोनों ही बैटर्स को। जगह मौजूद थी, मगर फील्डर को बीट ना कर पाई जो कि पॉइंट पे मौजूद थी, उन्होंने गेंद को रोका। थोड़ी गेंद नीची मिली, थोड़ा सा अनइवन बाउंस ज़रूर हमने नोटिस किया है। पेसर भी जब बॉलिंग कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं जो वीआईपी स्टैंड है, यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो वुमेन की इंटरनेशनल टीम है उसकी प्लेयर्स मौजूद हैं और इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। गुड टू सी देम हियर। एब्सोल्युटली, अगर आप देखें कि गुल फिरोज़ा हमें नज़र आती हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप पीछे देखें तो तूबा भी मौजूद हैं, और इस सीरीज़ से कबल भी हमने देखा था कि फातिमा सना ने गुफ्तगू की थी हमारी यंग गर्ल्स के साथ। और ये बड़ी अच्छी और इनकरेजिंग चीज़ है इन यंग गर्ल्स के लिए, और इस मरतबा बड़ा ही इनकरेजिंग शॉट पाकिस्तान के लिए, और साथ साथ ये देखें तालियां बजाकर इस चौके को वेलकम भी किया। कोमल की बाउंड्री।
यहाँ जो बाउंड्रीज के सिलसिले में खामोशी आ गई थी उसको तोड़ा यहाँ पे कोमल ने। एक लो फुल टॉस दी और रीच किया, गेंद के नज़दीक आई और उसको फुल टॉस बनाते हुए खेल के 4 रन हासिल किए। तो ओवर का हुआ इख्तिताम 8 के बाद पाकिस्तान 49 बगैर किसी नुकसान के। तारीखी क्रिकेट स्टेडियम नेशनल बैंक कराची। अब जो ज़्यादातर स्टैंड्स हैं वो जैसे कहना चाहिए अंडर दी स्काई हैं, क्योंकि छतें जो हैं वो उनकी हटा दी गई हैं और तामीर नौ के मराहिल से गुजरा है। मगर ग्राउंड बड़ा खुला खुला और कुशादा दिखाई देता है और ग्राउंड के शुमाली हिस्से में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पर कुछ नए स्टैंड्स भी तामीर किए गए हैं। टीटीपी अपना तीसरा ओवर करेंगी। गेंद को कट किया, अच्छा स्ट्रोक। 2 फील्डर्स गेंद का ताक़ुब कर रही हैं बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक। एक फील्डर ने गेंद को पुल इन किया, दूसरी ने गेंद को पिक किया और थ्रो किया और इस दौरान 2 कीमती रन का इजाफा। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन के 50 रन भी मुकम्मल 9वें ओवर के खेल में। 50 रन ही मुकम्मल और 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल होती हुई रावेल और कोमल के दरमियान। और ख़ास तौर पे ऑफ साइड पे तो शानदार शॉट मेकिंग देखने को मिली रावेल की जानिब से। इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक रावेल का, लेकिन फील्डर पहुंच गई। जितना अंदाजा लगा मुझे उतना अच्छा शायद मिडल या टाइम ना कर पाई और गेंद फील्डर तक ही जा सकी। 1 रन मिला। बहरहाल जिस तरह आपने जिक्र किया, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल वाज़ेह हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए। मैं जिक्र कर रहा था तो तामीर नौ के मराइल से गुजरा भी है और ये वो स्टैंड्स जो पहले जैसे कहना चाहिए अंडर कवर से इन पे रूफ या छत मौजूद थी, अब मौजूद नहीं है छतें इन पे। और ये देखें बड़ा खूबसूरत व्यू और बड़ा खूबसूरत कैमरा वर्क हमारे वन ऑफ द कैमरा क्रूज का। और जितनी भी तारीफ़ की जाए ग्राउंड इंतजामिया की वो भी कम है। साथ साथ जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, कराची का मौसम बड़ा शानदार रहता है जून जुलाई में भी, और ख़ास तौर पे जो शामें हैं वो बड़ी सुहानी रहती हैं। और कभी ज़माने में हम जुलाई में क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, मगर ये भी नाइट क्रिकेट एंड डे एंड नाइट क्रिकेट की देन है कि अब जुलाई में भी क्रिकेट हो रही है। यहाँ बिल्कुल मौसम भी बहुत खुशगवार हो जाता है और आइडियल कंडीशंस कंसिडर की जाती हैं क्रिकेट के हवाले से। स्वीप किया, बड़ा खूबसूरत स्वीप किया। कुछ जिसे कहना चाहिए उतनी अथॉरिटी के साथ स्वीप किया जितनी शायद यूनुस खान किया करते। व्हाट अ गुड शॉट। ऐसा लगता है कि तमाम शॉट्स इनकी किताब में मौजूद हैं। अगर आप राउंड द विकेट भी आए या ओवर द विकेट भी आए, इससे कबल हम देख रहे थे कि ऑफ साइड पे खेल के ज़्यादातर रन हासिल किए थे, लेकिन जैसे ही देखा कि लेग स्टंप पे पड़ी हुई गेंद थी, इसको घुटने के बल बैठ के स्वीप करने में कामयाब हुई। और खूबसूरती ये थी कि इसको ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेली और 4 मजीद रन हासिल किए। और सोने पे सुहागा ये नो बॉल कराई थी दीपी ने, तो अगली गेंद फ्री हिट के तौर पर खेलने का मौका मिलेगा रावेल को। पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा है और साउथ अफ्रीका के लिए करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो चौका लगा, एक नो बॉल है। फ्री हिट कमिंग अप। शफल करके ऑफ स्टंप पर आई, लिफ्ट किया, फील्डर गेंद को कैच कर लेंगी, मगर रन आउट बहरहाल होता है। ओ रन आउट होता है नो फ्री हिट पे भी, लेकिन अंपायर क्या थर्ड अंपायर की जानिब जाएंगे? जी हाँ, अंपायर ने रेफर किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बिल्कुल पहले उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद थर्ड अंपायर से रुजू करने का फैसला किया। डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग, जो कि आप जॉइंट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपकी अपनी जो टेलीविज़न या मोबाइल स्क्रीन है उन पे देख सकते हैं। देयर यू सी दी, लेकिन इन शी इज़ इन तो नॉट आउट रहेंगी और एक मजीद रन मिलेगा पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, आप देखें, आई थिंक शी डिड द बेसिक्स राइट और बल्ले को स्लाइड करते हुए क्रीज के अंदर दाखिल हुई और काफ़ी वक्त लिया बॉलर ने गेंद को गैदर करके स्टंप्स पे गिरने का। और अब फैसला बड़ी स्क्रीन पे
आ ही जाता है और जो है नॉट आउट, तो मौका मिलेगा यहाँ पे रवेल को अपनी इनिंग्स को जारी रखने का। जी हाँ, बड़ा टाइमली अपनी क्रीज में उन्होंने बैट ड्रैग करके पहुंचना जो है वो यकीनी बना लिया था। शफल करके घुटने के बल बैठी, स्वीप किया, डीप फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं, बहुत दूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर थी, वो पहुंच ना पाती, कुछ भी कर लेती, चाहे बाइसाइकिल या मोटर बाइक पे क्यों ना होती, और चौका मिल गया। दोनों बैटर्स को बखूबी अंदाजा है ग्राउंड के किस अतराफ में फील्डर्स मौजूद हैं, और उनको अंदाजा था कोमल को कि फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और राउंड द विकेट आने का यही खतरा होता है एक ऑफ स्पिनर के लिए। अपने घुटने को बल बैठ के इसको एक बार फिर पैडल करने में कामयाब हुई, और कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास, जैसा आपने जिक्र किया, और मजीद 4 रन मिले यहाँ कोमल को। दोनों बैटर्स बड़ी उम्दगी के साथ अब रन्स बना रही हैं। स्वीप करने गई, यू प्लेड 1, यू प्लेड 2, बट नॉट टू मैनी, जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है, और यहाँ पर डिथी भी ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुई जनूबी अफ्रीका को, और कोमल 23 रन की एक अच्छी और कोमल इनिंग्स खेलने के बाद अब वापस लौट रही। काफ़ी नाराज़ और मायूस नज़र आ रही हैं कोमल, क्योंकि एक अच्छा आगाज़ ज़रूर मिल गया था, और यहाँ पे एक बार फिर पैडल करना चाहती थी। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर शफल किया, फ्रंट फुट बिल्कुल अपनी क्रीज के अंदर मौजूद है, तो यहाँ कोई खतरा नहीं साउथ अफ्रीका के लिए। बहुत ज़्यादा शफल अक्रॉस किया, उसको पैडल करने गई, और कुछ बस किस्मत भी रही कि उनके पैड्स को टकरा के स्टंप्स को जा टकराएं, और वो अपना तवाज़ुन भी बरकरार न रख सकी। तो मायूस कदमों के साथ डगआउट पे वापस जाते हुए कोमल एक अच्छी इनिंग्स 23 रन बना के पवेलियन में वापस लौटते हुए। वो खुशी जो पहली ही गेंद पे मिल गई थी पिछले मुकाबले में जनूबी अफ्रीकन गर्ल्स को, उसको मिलने के लिए कम से कम 9 ओवर इस मैच में लगे हैं। इसलिए कहा जाता है कभी के दिन बड़े कभी की रातें, मगर आजकल चूँकि हमारा जो है पाकिस्तान में समर है, गर्मियां हैं, तो दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, वैसे रातें छोटी हो जाती हैं लेकिन कराची की रातें बड़ी खुशगवार भी हैं और बड़ी शानदार भी हैं, बड़ा प्लेजेंट वेदर है। न्यू बैटर इज़ अराइविंग, नंबर 1 डाउन, जो कि बहुत अहम पोजीशन है मेरे नज़दीक, चाहे T20 फॉर्मेट हो, और ज़ोफिशा अयाज जिन्होंने पिछले मैच में भी बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था जब 3 विकेट्स गिर गई थी, और अक्सा के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की थी, वो बैटिंग करने के लिए आई हैं। आज हालात बहुत बेहतर हैं उनके लिए, और यहाँ देखना है कि वो किस तरह से अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और किस तरह से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन यहाँ अंपायर की जानिब से, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी, और बैटर ने भी काफ़ी सरप्राइजिंग रिएक्शन शो किया। बिल्कुल जीशान, इसलिए मैं काफ़ी खामोश रहा। मैंने कहा कि अंपायर कोई फैसला दें तो मैं उसे बताऊं, मगर अंपायर की जानिब कोई फैसला ना। आई थॉट बाय द वे दैट वाज अ वाइड। बहरहाल अंपायर इज़ द बेटर जज जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं। अपने ग्लव्स को सर नौ उनकी स्ट्रैप्स को बांधने के बाद अब तैयार हैं। देन देयर यू सी द लेडी अंपायर जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पे ऑफिशिएट कर रही हैं। और नए आने वाली बैटर ज़ोफिशा अयाज अपना गार्ड मार्क करते हुए लड़खड़ाती हुई इनिंग्स को सहारा दिया था। अगर पहले मैच का जिक्र करें, एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, और आज भी कोशिश करेंगी कि वही परफॉर्मेंस इस सिलसिले को जारी रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये इस जुमला जो है वो कहा है, वाकई लड़खड़ा के, बल्कि लड़खड़ाने से ज़्यादा जैसे कहना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक अच्छी इस्तेलाह ये हो सकती, कश्ती बिल्कुल ही बीच मंझधार में थी जब ज़ोफिशा और अक्सा यकजा हुई विकेट पे, और बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने करना शुरू कर दी। मगर यही क्रिकेट है, एट टाइम्स हम देखते हैं कि आपका ओपनिंग स्लॉट बहुत अच्छा करता है, मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर अच्छा नहीं करता है। टाइम्स हम देखते हैं कि लोअर ऑर्डर और मिडल ऑर्डर चल जाते हैं, टॉप ऑर्डर नहीं चलता। ये थोड़ी सी उदास हैं आउट होने के बाद, सोच रही हैं कि शायद बेहतर मैं और कारकर्दगी दिखा सकती थी। इस गेंद को भी रोक कर खेलें। अच्छी बॉलिंग मलिसा की, दूसरा ओवर कर रही हैं, महज 7 रन दिए, काफ़ी किफ़ायती हैं। विकेट हासिल करने के बाद उस दबाव को बरकरार रखती हुई नज़र आ रही है आप साउथ अफ्रीकन वुमेन्स अंडर 19 टीम, और फील्डर्स भी काफ़ी एजाइल और फुर्ती के साथ अपनी फील्डिंग पे आपको नज़र आ रहे हैं कि वो रन रोकने की ताक़ुब में मसरूफ़ हैं। नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं कि विंड इज टगिंग द शर्ट्स ऑफ दीज गर्ल्स, इट गोज टू शो wind is still blowing off the front foot. This one is played back to the bowler gently.
end of the over. 10 overs have been bowled, 64 for 1. And commentary will be taken over by FS Malik and Ali Yunus. Oh, thank you, Rana Shfaq and Zishan Khalid. And the drinks break is over. Halfway mark, and it looks like that Pakistan have gotten a very good start. They're 64 for 1. Ravel is unbeaten at 38, whereas her partner Zulfisha is yet to get off the mark. A different role for her. She had to do the repair work in the first innings, in the first matches innings rather, and now it's a different role. Rensburg is into the attack, bowls it short and wide, gets tapped away through covers for a single. What do you make of the situation so far, Ali? It definitely is favouring Pakistan at the moment, comparing from the last game as you mentioned. That's her first game. For Pakistan, the captain of Pakistan, Fizza. She can hit them big, she can hit them long.
I played a very vital cameo in the last game as well of 14 runs run a ball. Fizza Fiaz. You're talking about the strike rates. People play very fast nowadays, Ali. I tell you what, England when touring Pakistan in December 22 in Rawalpindi, they scored 506 runs. Incredible in one day, and that too in 75 overs, breaking 112 years record. 112 years record. Swept away this time and beats the square leg into the boundary for 4. Zulfisha gets her first boundary, and it's a good one. Great game awareness. She knew that both the fielders on the onside are inside the circle. All she had to do was find the gap, and she did beautifully. She's starting off from where she left in the previous game. Yeah, that's great game awareness, understanding where the fielders are. This is what you want to see from these young girls. Improvement. And you can tell from the previous game to this game, there's huge improvement. In the air, could have gone anywhere, but this time it's going towards the boundary. This is a lucky escape, but you know, the fortune favors the brave. So she's looking to score runs, and it's working for her. Zulfisha looking good. Absolutely. You say fortune favors the brave. I say fortune favors the prepared. Because these girls have worked hard, they prepared. So you do get some luck once you have worked hard on your skills, on your fitness, everything. Yeah, that could have easily gone onto the hands of the fielder another day. But she'll take it from both hands. Right between the two fielders. Doesn't get any closer than this. End of 11, it's 75 for 1. Good to see some families coming in. Normally, you don't very often come to see these spectators, especially when the matches are being played in the National Bank Stadium of late. But these young girls do have some sort of sport at their home soil. Rensburg to continue. Melissa, beg your pardon. Left armer bowls the arm bowl to start off and gets tucked away off the pads for a single. Yeah, you talk about the support that these girls have started to have from Pakistan, the local people. They've started talking about it. They've started watching women's cricket. I don't remember the World Cup that happened. Any women's cricket being watched that much. That almost everyone has an opinion about women cricket now. Yeah, of course, and that's why I always say that it's a very good initiative by Pakistan Cricket Board to provide these young girls at this level, this sort of platform, which is going to only get better. You talk about Pakistan's ranking. Their national side rank 8. But yeah, at this level, they are better. Absolutely. It's good that things have started to happen for them. It's good that we've talked about the coaches being involved with them and the pathway being given to these young girls. They've been looked after now. Series, as you said, it's been organized against the top quality side of South Africa. That's how you get better. That was inside out, played through the covers for a single. Most of these bowlers of South Africa, the spinners in particular, have been bowling with a loopy trajectory, giving a lot of air, understanding that it's not that easy to pick the length early. Look at that. And mixing it up as well. Have not been predictable. So this is good to see. Yeah, it's a great challenge that these Pakistan batters are giving to South Africans. In the previous game, it was pretty much easy, especially the first 10 overs. And now Pakistan should be looking to get at least 140 from here on. And if Ravel and Zulfisha can carry on batting for another 3 to 4 overs with the likes of Fizza to come, it's pretty much possible to get to that 140 mark. 12 done. It's 77 for 1.
Right, then yet another very good partnership building up for Pakistan after the very good opening stand. And we're into the over number 13. And the projected score is 128. If they get 130 odd, they will be in the game. There is no question. Van Wyk will continue into her third over. Oh, slapped away and clears short mid-wicket. Plenty of work to do for the fielder. She was doing the patrolling at the boundary, does well to stop it. Yeah, excellent fielding at the deep, you must say. She's surely saved a couple of runs. In fact, just one, in fact, 3 runs. Both the batters, they were looking at the ball rather than running between the wickets. Flighty delivery this time, altering her length. They will take an overthrow. Just a bit of urgency and lapse in concentration by the South African fielders because they've been put under the pump for the first time in the series. This is good to see. They surely have been. There's no doubt about that. Again, change of angles. Very quickly, they're making changes around the wicket now. Bowled her round her legs, beautifully bowled, gave plenty of air, and that sweep attempted by Zofisha goes to no avail, and in the end, the bowler Van Wyk has the last laugh. Yeah, that's a dream delivery for a leg spinner, bowling round the wicket and bowling the batter from round the wickets and hitting the stumps. That's beautiful. Reminds me of the great Shane Warne. He used to bowl such deliveries, and this young girl must be a very proud girl because she's been bowling with some control, and that is excellent. Yeah, she didn't even cover the line. Zufisha just missed the line completely in the turn, getting the better of her. She'll make a long walk back, scoring 11 of 12. So Rahima, the new coming batter, makes her way to the wicket after the departure of Zofisha, who played brilliantly. Rahima Sayed, the left-handed bat, she happens to be the only left-hander in the side. Wasn't that impressive in the first game, but this is another opportunity for her. Yeah, she got a piece of a delivery in the previous game. Probably the best delivery we have seen in the series so far. That was bowled to her in the previous game. The great length and line. Gets another good one, but this time safely negotiates that. Well, Van Wyk is bowling brilliantly. She's mixing it up. She's bowling quicker through the air. That was a loopy delivery. The previous wicket of Zofisha bowled her around her legs. Beautifully done. Flighted delivery, and she has hit that in the air. It's a chance. Oh my dearie! What are you doing? That should have been taken as easy as they come, and down she goes. Well, she had a chance to take on the second attempt as well, Ali. Yeah, that's not good from world number 2 side. She should have taken this one. Raima on the other end, a very lucky start for her. Sometimes you do need luck to start off your inning. But doesn't get any easier than this at this level. At any level, if you're playing cricket here, at this level, you've got to be taking those catches. 13 bowled, 81 for 2.
It's a Al-Batal production and technologies. A beautiful production this, and great work by our camera crews, all the staff, the engineers, the technical staff have done a good job at this level. Absolutely. Organizing this series, first good thing, and then broadcasting it. Just amazing. Great initiative. Because once you're seen by millions, it's then when you show improvement. You want to improve because people are watching, people are making opinions about you. That gives you that opportunity to improve also. Like Ravel has done from the previous game. Very impressive. She looks like a proper player, very elite sort of player. She's got the range, she's shown the range, she's very brave. She's gone over the head of the fielders also. So that shows that she's not scared to use it, the long handle. And Pepsi is one of our sponsors. Mieke Voorst, the captain, into the attack for the first time in this innings. Bowls a good delivery, worked away on the onside for a single. I liked her captaincy, the way she has shuffled her bowlers. Rivaj, to the left of your screen at the bottom, one of our sponsors. They made this series possible by sponsoring. Different angle this time and outside the office stump. It's a wide delivery, way too wide. Yeah, no turn whatsoever. Oh, that was a beauty. That was a very good delivery, peach of a delivery. Not a lot of turn, but really had her hopping on her crease on that occasion. This is good bowling. Yeah, I wonder if Pakistan think tank might have thought of promoting Aksa to this place at number 4, just to give that momentum. Because Pakistan had a good start. Yes, they did good in promoting Zulfisha, but they could have promoted another in-form batter. But probably it's about giving everyone opportunity in this series. It's about the different roles as well. Certain players are given different roles in different situations. So today was a different role for Zulfisha. She started to score runs from the Voorst go, but couldn't really prolong her innings. Got a good one. Round the legs was bowled. And driven away this time, gets past, covers in the circle. Now the scoring rate has been just stopped a little bit after the departure of Zulfisha in particular. So this is kind of a period where South African girls can think that they can have a little bit of positivity towards this innings. This time played away, slogged away rather, into deep mid-wicket on the second attempt, manages to field that. So she's looking to score runs. Rahima has a plan. This is quite obvious. Absolutely, you called it right. I think the role that management has given her is to just go after the bowling, because Ravel can, on the other hand, say one end, and batters from the other end can always hit big. Again, thank you, Pepsi. It's very important that these sponsors come into play, especially at this level, sponsoring this young series. It's a great thing from these sponsors. We'll talk more about them because it's 14 down at the moment, 88 for 2.
DTP to continue. Will be bowling her final over. Nicely bowled and played away down to Gully for no run. Ravel is looking very good, almost run a ball. Actually, in fact, she has scored run a ball up till now. Yeah, but FS, it's about time now that she starts using the long handles, start looking for boundaries, because 6 overs are left and Pakistan would want to get to 130, 135 at least from here on. Because we saw in the previous game, 104 didn't really challenge the South Africans, although Pakistan had a couple of good run-outs to their favour, but that's not going to happen every night. So you got to put some challenging score to challenge this quality side, South Africans. And for that to happen, Ravel from here on must get going. A good point you made, but I just get the feeling that she's just taken a little bit of time because she has done all the hard yards to get up till this point, and she's only 4 away from her first half a century. So that's why maybe taking a little bit of time. Oh, look at that. A commentator's curse is a word, and a boundary comes for Ravel to get her first half a century. That's a very good shot, and she gets the standing ovation. Very good innings, better than run a ball. Fantastic, brilliant inning. Very impressive, very cool, very calm, composed, technically very correct, and very brave also. That's what you want from a young batter. And she's grabbed this opportunity. Scored her first 50 at this level, 49 deliveries, much needed for Pakistan to get to a good start. Blocks that one to covers. See, here's one thing that I was mentioning. She scored 1-4 and played 4 dot deliveries. Had those been singles or doubles in those instead of dot deliveries, score would have been a different one. This time again, just hitting the fielder, not able to find the gap. Very good point you made. Yeah, they need to just keep the scoreboard ticking over along with the boundaries, with the odd boundaries. 15 bowled, 92 for 2. And with that, it's going to be a change in the voices. The great Rana Ashfaq will be joined by Zishan till the end of this innings. बहुत शुक्रिया एफएस मलिक और अली यूनुस. रन रेट को यकीनन बढ़ाने की ज़रूरत और इस पोजीशन में भी हैं. ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मनाजर कराची के, और जितनी भी तारीफ़ की जाए हमारे कैमरा क्रूज़ की वो भी कम है. रावेल 50 रन्स में हैं और राहिमा 3 रन्स पर नॉट आउट हैं. निशान खालिद मेरे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब. और एक और ज़िंदगी मिली है यहाँ पे राहिमा को. बड़े शॉट खेलने की ताक़ुब में फ्रंट लेग को क्लियर करके सीधा खेलना चाहा और खुशकिस्मत रही कि लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर मौजूद थी वो बर्वक्त गेंद तक ना पहुंच सकी. ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत भी हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं अगर दूसरी एस्पेक्ट की बात करें, पिछले 5-6 ओवर्स में साउथ अफ्रीकन रन रेट को कम करने में कामयाब ज़रूर हुई हैं, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब. मगर देखते हैं अब चूँकि रावेल पूरी तरह से सेट हैं और रहीमा भी कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे कहाँ तक पहुँचती हैं. नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की तमीर करदा इमारत का खूबसूरत मंजर आपसे कुछ देर पहले आप अपने कैमरा स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे थे, और मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा है कि तामीराती काम का सिलसिला हमें यहाँ होता हुआ नज़र आता है. और 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल ये इमारत तामीर की गई थी, और ये वो मीडिया सेंटर एंड जहाँ पे कॉम बॉक्स भी मौजूद और हमारी आवाज़ आपको वहाँ तक जारी पहुँचती हुई. दौरान जाने दिया विकेट कीपर के पास, और अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं. तो अच्छी हिकमत अमली नज़र आ रही है. एक अहम मौके पे अपने आप को मुतारिफ कराया है कप्तान मीका एंड वोर्स्ट ने, और काफ़ी हद तक रन्स बनाने के सिलसिले को थाम के रखा है. जी हाँ, एक तो ज़्यादा पेस नहीं दे रही, और दूसरी पहले विड्थ भी नहीं दे रही थी. इस गेंद पे ज़रूर थोड़ी विड्थ थी, मगर पेस इतनी कम थी. इट टुक लॉट ऑफ पेस ऑफ द बॉल के बैटर कुछ खास कर नहीं पाई.
जो कि साउथ अफ्रीकन के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मगर अब कम वॉट में पाकिस्तान गर्ल्स को जा रहना बैटिंग करना ही होगा। काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी यहाँ पे कप्तान मीका वन वर्स, लेकिन गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर पिच हुई और यही वजह थी कि अंपायर ने नफ़ी में सर हिलाया। रावेल, अब वो वक्त आ चुका है कि इनको कुछ बड़े शॉट्स दिखाने होंगे और जल्द से जल्द तेज़ रन हासिल करने होंगे अपनी टीम के लिए। इन मौके पे अगर सिंगल्स के ज़रिए ही रन हासिल हुए तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा साउथ अफ्रीका टीम के लिए। सिर्फ 2 रन हासिल हुए इस ओवर में। 16 के बाद पाकिस्तान 94 2 विकेट्स के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग साउथ अफ्रीकन कैप्टन की। 2 ओवर्स में महज 9 रन दिए। खासतौर पे ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की बैटर्स तेज़ी से रन बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। एक बार फिर आप वो स्टैंड्स देख रहे हैं जो कि अब बगैर छत के हैं, और ये वो नई बिल्डिंग जो तामीर की गई है ग्राउंड के शुमाली हिस्से में। और अब रावेल आपकी स्क्रीन पर असर नौ अपने ग्लव्स पहनकर 56 गेंदों पे 51 रन, जो कि अब थोड़ा सा ऑन द स्लोवर साइड है। फ्रेश गार्ड लेने के बाद तैयार है। और ये अगर शराकत भी देखें 15 रन 21 गेंदों पर बने। इस दौरान नए स्पेल के ओवर का आगाज़ किया मिया लेनोर ने, काफ़ी नपी तुली गेंदबाजी भी की आज इन्होंने एक बार फिर नई गेंद से। ऑल्दो आज विकेट्स हासिल ना कर सकें, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इकोनॉमी रेट पे नज़र डालें तो वो रन बॉल से भी कम। और T20 क्रिकेट में किसी भी लेवल पे आप खेलें, चाहे अंडर 19 हो या A टीम हो, अगर आप रन औसत आपकी कम रहती है रन्स कंसीड करने की, तो आपकी टीम को ही फ़ायदा होता है। जी हाँ, माया टेलर इस वक्त बॉलिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका की अंडर 19 की राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर। और अगर 140 रन से कम रन बनाती है पाकिस्तान ने, इवन 130 से, तो वो जो ओपनिंग स्टैंड का इनिशिएटिव था वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गंवाएंगी, कहीं ना कहीं लूज करेंगी। खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर को बीट ना कर सकें। और तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका के कप्तान की, जब कुछ से कबल आप जिक्र कर रहे थे, जो हमारी स्क्रीन पे भी मौजूद है। अगर आप देखें मुसलसल मिड ऑफ के फील्डर को दायरे के अंदर ही रखा है, दावत दे दी नज़र आ रही है बैटर्स को कि वो फ्रंट लेग को क्लियर करें और शॉट अटेम्प्ट करें, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो सकी पाकिस्तान की बैटर्स। पीछे गिरी हुई गेंद का भरपूर फायदा उठाया राहिमा ने। लेग स्टंप पे पड़ी हुई गेंद आने दिया इसको, स्विवलिंग पुल शॉट खेलते हुए गैप तलाश किया स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से, और कीमती 4 रन समेटे। जी हाँ, और बड़ी खुशी फराम की इन गर्ल्स को जो मुकाबला देख रही हैं। बैक फुट पे आई, लेग स्टंप पर भी गेंद थी और पीछे भी गिरी थी, बड़ा वक्त था और बड़ी ज़रूरी बाउंड्री पाकिस्तान के लिए। देखें 1 लेगेड हो गई थी थोड़ी देर के लिए, मगर अपने स्ट्रोक को बहुत उम्दगी के साथ उन्होंने खेला, स्विवल करते हुए खूबसूरत चौका। और ऐसे चौके 1-2 नहीं, बहुत सारे चाहिए इन बची हुई 21 गेंदों पर, अगर पाकिस्तान ने 140-150 तक पहुंचना है। क्योंकि अगर आपका 60-65 का आगाज़ हो 9 ओवर्स में, तो आप एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि 150-140 तो लाजमी होने चाहिए। अच्छा आगाज़ फराहम किया था, अब अच्छा अख्तिताम भी करना होगा यहाँ पाकिस्तानी बैटर्स को। हवा में खेले हैं, आउट होने का खतरा फील्डर आ रहे हैं, और इस बार कोई गलती नहीं की। अपने चेहरे के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कैच अपने हाथ में महफूज किया। राहिमा की एक और बाउंड्री हासिल करने की तलाश में अपनी विकेट गंवा बैठी, और मेयर लेनोर को मिली उनकी पहली कामयाबी। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा साउथ अफ्रीकन मुसलसल कर रही थी। कैप्टनसी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ भी देखें फील्डर कवर्स में भी मौजूद थी और एक्स्ट्रा कवर्स में भी। ये उन्होंने क्लियर करना चाहा है इनसाइड फील्ड को। बॉल बिल्कुल फेयर है बाय गुड मार्जिन। और ये हम देख सकते हैं कि ऑफ साइड में जब ऊंचा गया ये स्ट्रोक, तो जो एक्स्ट्रा कवर्स की फील्डर थी शर्ट नंबर 7 में, उन्होंने बड़ी उम्दगी के साथ गेंद को कैच कर लिया। इस तरह रहीमा कोई बहुत ज़्यादा तंग न कर सकी स्कोरर को। 8 गेंदों पे 8 रन बनाए। 99 पे 3 17वें ओवर में। अगेन मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। डिटिप ही कैचर थी।
इनिंग्स के आगाज़ में जो प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 135 को छू रहा था वो कम होकर 119 तक आ पहुंचा है। और क्रीज पे आ पहुंची हैं पाकिस्तान वुमेन U19 टीम की कप्तान फिज़ा फयाज, जिन्होंने अच्छा कैमियो खेला था पिछले मैच का। अगर हम जिक्र करें, रन बॉल 14 रन हासिल किए थे और एक अच्छी पार्टनरशिप में मुलविस थी शहरबानों के साथ। अब उनके पास मौका है इस रन बनाने के सिलसिले को जारी रखने का। ऑन दी अदर हैंड मियां लेनोर आज एक बार फिर एक अच्छा दिन उनका गुजरा गेंदबाजी का अगर हम जिक्र करें। खड़े खड़े इसको खेलना चाहा लेकिन कोई मुलाकात ना हो सकी बल्ले और गेंद के दरमियान। अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करती हैं मियां लेनोर। उमूमन हम वुमेन्स क्रिकेट में इतनी तेज़ रफ्तार गेंदबाजों को नहीं देखते, लेकिन अगर तेज़ तरीन गेंदबाजों का जिक्र करें ख़ासतौर पर वुमेन्स क्रिकेट का, तो वो आपको साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल या मरीजन कैप सर फहरिस्त नज़र आती हैं। जी हाँ, ये लास्ट विकेट गेंद को ओवर द टॉप ऑफ मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर्स खेलने के लिए गई। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर्स दोनों आई, बट टीटीपी जो कि एक्स्ट्रा कवर्स से आई थी उन्होंने गेंद को उम्दगी के साथ कैच किया और आउट हुई थी लेफ्ट हैंडेड बैटर। यहाँ एक और मौका था लेकिन गवाया साउथ अफ्रीकन टीम ने। विकेट कीपर अपने रास्तानों में कैच महफूज ना कर सकी और मौका मिला है फिज़ा फयाज को एक बार फिर अपनी इनिंग्स को जारी रखने का। ओवर हुआ मुकम्मल 17 के बाद पाकिस्तान वुमेन्स टीम 99 3 विकेट्स के नुकसान पे। जी, आप बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स ऑलवेज एक अट्रैक्टिव कमोडिटी रहे हैं, चाहे वो विमेन क्रिकेटर्स हों या मेंस क्रिकेटर हों। जहाँ तक फास्ट बॉलर्स का ताल्लुक है, उनकी बॉलिंग में एक अलग अट्रैक्शन रहती है व्यूवर्स के लिए। ऐसा नहीं कि स्पिनर्स अट्रैक्टिव नहीं होते। शेन वॉन इतने अट्रैक्टिव हैं कि उनके लिए नासिर हुसैन वगैरह कहते हैं कि वो पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेते थे, इतना बड़ा उनका ऑरा था इस तरह। लेकिन फास्ट बॉलर का दौड़ के आना और कभी कभी स्टंप्स को उड़ाना या पैड्स पे थर्ड करना गेंद को, उसका एक अपना लुत्फ है। और चाहे वो आप विमेन क्रिकेटर हों या मैन क्रिकेटर हों, अगर आपके पास पेस है तो उसका एक अपना मज़ा है। इस दौरान हवा में खेली हैं लेकिन खुशकिस्मत रहेंगी एक बार फिर रवेल। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन से दौड़ती हुई फील्डर और उनके दरमियान गेंद आ गिरी और इस दौरान दौड़ के सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका मिला। और इसी एक रन के साथ पाकिस्तान वुमेन्स U19 टीम के अब 100 रन भी मुकम्मल 18वें ओवर में। ये शायद कुछ पहले हो जाने चाहिए थे, मेरे हिसाब से 15-14 ओवर्स में 100 रन कर लेने चाहिए थे। थोड़ा इनको वक्त ज़्यादा लगा है और आप 18वें ओवर में जाकर 100 रन बने। और जो ओवरऑल रेट है वो 6 रन से कम हो गया है, तो अब सिर्फ 16 ही गेंदें बाकी हैं। और फिज़ा मैं समझता हूँ कि जानती हैं उन्हें क्या करना है, और रावेल इतना वक्त गुजार चुकी हैं कि उन्हें पता होना चाहिए क्या करना है। फ्लाइटेड गेंद खड़े खड़े ड्राइव किया, लेकिन एक बार फिर मिड ऑफ की वो फील्डर जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं कि वो दायरे के अंदर ही मौजूद नज़र आती हैं, एक डेफिनेट प्लान के साथ, हिकमत अमली के साथ उतरी है साउथ अफ्रीकन टीम और अब तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में भी कामयाब हुई है। साउथ अफ्रीकन ऑलवेज बड़ी फाइटिंग टीम्स रही हैं, चाहे उनके मैन क्रिकेटर का जिक्र करें। और इंडिया में जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया, और ये बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट। 4 रन के लिए गेंद को मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से खेली और एक मच नीडेड और वेलकम बाउंड्री पाकिस्तान के लिए। बिलाखिर गैप तलाश करने में कामयाब हुई यहाँ फिज़ा फयाज, क्योंकि गेंद में इतनी रफ्तार भी नहीं थी और इतना रूम प्रोवाइड कर दिया था मिलिसा ने कि वो खड़े खड़े इसको नज़दीक आने दिया फिज़ा ने, और उसके बाद गैप तलाश किया एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के दरमियान से। इतना खूबसूरती से टाइम किया था कि मौका नहीं था दोनों ही फील्डर्स के पास। गेंद की ताकुब में दौड़ी ज़रूर, लेकिन बाउंड्री मिली पाकिस्तान को। और मैं जिक्र कर रहा था पिछले स्ट्रोक के दौरान कि ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी कारकर्दगी साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम ने दिखाई। और मेन क्रिकेट का तो आप देखें, पार्थीड ने हिट किया उन्हें फॉर 23-24 ईयर्स, और उसके बाद जब वो आए तो आते ही छा गए। सो दे आर वेरी फाइटिंग व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट टीम्स। इस दौरान बड़े शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर आ रही है गेंद के नीचे और शानदार एफर्ट देखने को मिली। मिड विकेट से दौड़ती हुई फील्डर गेंद के काफी नजदीक आ गई थी, लेकिन कैच अपने हाथ में महफूज ना कर सकी और इस दौरान मौका मिला पाकिस्तान टीम को 2 रन हासिल करने का। और लेट्स होप एवरीथिंग इज ओके एज फार एज द इंजरी इज कंसर्न। 2 रन के साथ ओवर का इख्तिताम। 18 के बाद पाकिस्तान वुमेन्स टीम 106 3 विकेट्स के नुकसान पे।
गुज़िश्ता ओवर में भी 7 ही रन बन सके, हालांकि एक बाउंड्री भी हिट हुई मगर 3 डॉट्स हुई, जिसकी वजह से कोई बहुत प्रोडक्टिव या बहुत अच्छा ओवर पाकिस्तान के लिए वो भी नहीं रहा। अब 2 ओवर सिर्फ बाकी हैं, देखते हैं कि रावेल और फिज़ा किस अंदाज से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाती हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की निगाहें मैं समझता हूँ यहाँ से कम 130-135 अभी भी होनी चाहिए। इस दौरान स्ट्रेट खेले, बॉलर के सर के ऊपर से फील्डर आ रही है दौड़ती हुई, लेकिन रोक नहीं पाएंगी और कोशिश जाएगी ना कराएगा। 4 कीमती रन हासिल किए रावेल ने। ये बड़ा खूबसूरत शॉट, बड़ी उम्दगी के साथ फ्रंट फुट पे आई एंड देन स्ट्रक दैट वन फेयरली हार्ड, क्योंकि फील्डर ने बड़ी सरतोड़ कोशिश की जिसे कहना चाहिए। वो दौड़ती आई, ये देखिए पिच्ड अप एंड इट गॉट डिस्पैच्ड ओवर द हेड ऑफ द बॉलर। बड़ी कुव्वत के साथ भी हिट किया, और ये बड़ा महफूज इलाका भी कहलाता है, क्योंकि फील्डर लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे होते हैं, चाहे कितने ही स्टेटिश क्यों ना हो। ये देखिए उन्होंने डाइव इन किया, मगर इनकी डाइव इन होने से पहले ही गेंद निकल गई थी। इस दौरान हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन उनके हाथों से काफी दूर थी। थर्ड मैन से फील्डर को दौड़ के आना पड़ा और एक मजीद रन हासिल किया यहाँ पे रावेल ने। तो इरादे जाहिर कर दिए हैं रावेल ने, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स का अब खेल जारी है और ज्यादातर रन बाउंड्री के जरिए समेटने की कोशिश में नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली, और मैं समझता हूँ कि अब ऑन द कार्ड्स भी होना चाहिए और करना भी चाहिए रावेल को, क्योंकि ये हैज टेकन गुड नंबर ऑफ बॉल्स। उनकी निगाहें अब जमी होनी चाहिए। साथ साथ फिजा को ये बात मालूम भी है, लास्ट मैच में भी हमने देखा था उन्होंने अच्छी जारहाना बैटिंग की थी एट द फैग एंड ऑफ द इनिंग्स। राउंड द विकेट अपना एंगल तब्दील किया और एक बार फिर बीट करने में कामयाब हुई। नाखुश नजर आ रही हैं अपने इस शॉट से फिजा। जी हाँ, कहीं ना कहीं 7 गेंदों पे 6 रन शायद इस वक्त काबिल कबूल कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि आपके पास 7 विकेट्स बाकी हैं। आप ज़रा ज़्यादा तेज़ बैटिंग की तवक्को करते हैं। बैट थ्रो किया था, गेंद गिरने के बाद हल्का सा बाहर की जानिब निकली। और इस दौरान आइए चलते हैं हम नीचे डाउनस्टेयर्स, जहाँ पर हमारे साथी अली यूनुस मौजूद हैं विद स्लैश इंटरव्यू। Yes, thank you very much, guys. I've got alongside me somebody who's very talented, very skillful, and has shown a lot of promise and improvement in the recent past that she's played cricket. मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान अंडर 19 की विकेट कीपर बैटर कोमल खान। कोमल, वेल प्लेड। आज आपके पास मौका अच्छा था। What happened? आप क्या सोच रहे थे जब आप अंदर बैटिंग कर रहे थे? पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं हुआ था, तो यही कोशिश की थी कि अपने टीम के लिए जितना बेस्ट कर सकूं करूं, और आई थिंक कि आज थोड़ा सा बेहतर हुआ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में और बेहतर नज़र आएगा। आपकी जो अप्रोच है जब आप क्रीज पे होते हैं बड़ी अटैकिंग और बड़ी पॉजिटिव होती है, क्या ये जब से आप क्रिकेट खेल रहे हो या अभी डेवलप की ये चीज़? नहीं, मेरे स्टार्ट से है। अब थोड़ा सा जो है मतलब पिछले मैच से मतलब मैंने सोचा था कि बस मतलब जो नेचुरल गेम है उसी को फॉलो करना और इसी सिंपल ही रखना सारी चीज़ें, और उसको जो है उस तरह की और थोड़ा सा बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सब गर्ल्स के लिए, कि इतनी बड़ी सीरीज ऑर्गेनाइज की गई है। आगे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। जी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था और होम सीरीज़ मिल रही हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर यहाँ पे हम सब ओवरऑल टीम परफॉर्म करती है तो आगे इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारे कोचेज़ ने भी काफ़ी हमारे ऊपर वर्कआउट किए, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हम यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं। अच्छा, पिछले मैच में जब आप जल्दी आउट हो गए थे तो कोचेस क्या मैसेज देते हैं? कुछ डांटते वगैरह हैं या आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप आ जाइए अगले मैच में कीजिए? नहीं, उन्होंने यही बोला था कि बस कोई बात नहीं, हो गया है, मतलब पहला मैच था और प्रेशर भी था थोड़ा होम सीरीज़ का, तो नॉर्मली रखा था कि कोई बात नहीं नेक्स्ट मैच में हो जाएगा। आप विकेट कीपर बैटर हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी क्रिकेट कहाँ से शुरू की और किसको फॉलो करते हो, किसको देख के क्रिकेट शुरू की? वैसे तो वुमेंस में मुझे सारा टेलर काफ़ी पसंद थी एज अ विकेट कीपर बैटर, लेकिन मेंस में मैं विराट कोहली को फॉलो करती हूँ। वो एक अच्छा फिनिशर है और मुझे भी एक इंशाल्लाह अच्छा फिनिशर बनना है पाकिस्तान टीम के लिए। आज की मैच की वाइब कैसी आ रही है? मैच जीत लोगे आज? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट कोमल खान। थैंक यू सो मच। That was the wicket-keeper batter of Pakistan under-19 side. Back to you guys in the commentary box. Thank you, Ali. Komal Khan was talking to him, the wicket-keeper batter of Pakistan under-19, and she batted well today. इस दौरान बाहरी किनारा लिया, लेकिन थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थी और सिर्फ एक ही रन हासिल कर सकेंगी। तो आगाज़ भले ही अच्छा ना हुआ इस ओवर का, लेकिन इख्तिताम शानदार अंदाज से किया मिया लिनोर ने इस ओवर और अपने स्पेल का,
19 ओवर्स हुए मुकम्मल। पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 113 3 विकेट्स के नुकसान पे। रन रेट इज स्टिल अंडर 6 फॉर पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन, जो कि यकीनन मैं बार बार थोड़ा एम्फिसाइज ही कर रहा हूँ इस बात पे कि कम है। और ये पार्टनरशिप भी 14 गेंदों पे 14 रन ही की हो सकी है। होपफुली कि ये आखिरी ओवर पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। एशली वैन वेक जो कि लेग स्पिनर हैं, और एक और अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि ये इनिंग्स का आखिरी ओवर है और बैटर्स अमूमन बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट से गेंद कराते हुए इसको एक बार फिर बीट कराने में कामयाब हुई। और एक और अच्छा स्पेल आज एशली वैन वेक का, पहले मैच में भी अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल करके दबाव को बरकरार रखा था, और यहाँ पे दबाव मुकम्मल तौर पे फिजा के चेहरे पे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा स्पेल, अच्छे से बढ़कर कुछ होना चाहिए इसके लिए कि चौथा ओवर कर रही हैं ऑन द ट्रॉट, ऐसे वक्त में बॉलिंग करने के लिए जब ऑल सेट था पाकिस्तान के लिए फॉर द बिग स्ट्रोक्स, और सिर्फ 14 रन देकर एक खिलाड़ी को भी उन्होंने आउट कर लिया है, यानी ये विकेट लेने में भी कामयाब होंगे। तो जितनी तारीफ की जाए वैन वाइक की वो कम है। और यहाँ पर बैटर जो हैं वो रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। रिटायर्ड हर्ट आउट जो है वो आजकल कहा जाता है, पहले रिटायर्ड हर्ट होता था, अब रिटायर्ड आउट आप हो सकते हैं। हर्ट होने के बाद आजकल रनर वगैरह नहीं दिए जाते, जो कि माजी में सहूलियत दस्तियाब थी। बहरहाल अब इनको आउट ही तस्वर किया जाएगा, शी कांट कम टू बैट अगेन। बिल्कुल, और यहाँ मौका मिलेगा इनिंग्स की आखिरी 4 गेंदों का फ़ायदा उठाने का शहरबानों को, जिन्होंने शानदार अंदाज से बैटिंग की थी पिछले मैच में, और एशली वैन वीक के खिलाफ ही बुलंदोबाला वाहिद इनिंग्स में लगने वाला छक्का इनके बैट से आया था। पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और यहाँ पे फील्डर की भी कोशिश थी कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थ्रो करके स्टम्प्स को बखेर दी, लेकिन मौका मिला शहरबानों को सिंगल हासिल करने का। इससे पहले भी माजी में हमने देखा है रिटायर्ड आउट की मिसालें, चाहे आप T20 लीग क्रिकेट का जिक्र करें जिसमें दानिस्ता तौर पे बैटर को रिटायर्ड आउट किया जाता है। ये वाइड बॉल होगी और एक कीमती रन मिलेगा, लेकिन यकीनन मैं जो मेरा इसमें ओपिनियन है, माय हम्बल ओपिनियन, कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अनफेयर है ऑन द बॉलिंग साइड, कि एक ऐसा बैटर जो स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसी बैटर जो स्ट्रगल कर रही हो और बॉलर्स ने उसको काबू किया हो, वो रिटायर आउट हो जाए और कोई ऐसे फ्रेश आदमी को या फ्रेश गर्ल को या फ्रेश वुमेन को भेज दे जो चक्का लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो ये बिट ऑफ अनफेयर। बहरहाल आई एम नॉट द MCC, आई एम नॉट द ICC, मगर मैं जस्ट इन माय ओपिनियन। और ये ऊंचा शॉट लॉन्ग ऑन पे फील्डर क्लियर किया और जोरदार छक्का। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर फुल टॉस का फायदा उठाया यहाँ रवेल ने, और जिस बाउंड्री की तलाश थी उसको समेटने में कामयाब हुई। फुल टॉस खेलते हुए इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद आ टकराई और बाउंड्री के बाहर जा गिरी, कीमती 6 रन के लिए। जी हाँ जिशान, बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के स्ट्रोक, वैसे तो इस तरह के स्ट्रोक्स चाहिए, मगर एक छक्का बारह लगा है। इनिंग्स की आखिरी गेंद, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर गैप तलाश किया और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से खेल के 4 रन हासिल किए रावेल ने, जिनकी शानदार बैटिंग का सिलसिला थ्रू आउट दी 20 ओवर्स हमको देखने को मिला। जिस अंदाज से आगाज किया था वैसे ही इख्तिताम भी करने में कामयाब हुई और 125 रन तक ले जा पहुंची पाकिस्तान की इनिंग्स को इनके मुकर्रर 20 ओवर्स में। ये आखिरी 2 गेंदों पर 10 कीमती रन बनाने में कामयाब हुई और बड़े अच्छे अंदाज में नॉट आउट रही जहाँ तक रावेल का ताल्लुक है। 64 रन की एक अच्छी और पुरएतमाद इनिंग्स उन्होंने खेली। बीच में स्लो डाउन ज़रूर हुई वो भी, और पाकिस्तान की दूसरी बैटर्स भी, जिसकी वजह से शायद जो 140-150 हो सकते थे वो ना हो सके। मगर फिर भी ऐसा स्कोर है जिशान जहाँ पर पाकिस्तान बॉलर्स के पास एक चांस, एक मौका मौजूद रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि 104 तक पहुँचते पहुँचते 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। स्कोर कार्ड पे कॉमल के 23 रन हैं, रावेल के 68, 11 रन जोफिशा ने बनाए जो 1 डाउन आई, रहीमा 8 रन का कंट्रीब्यूशन दे सकी, फिजा ने सिर्फ 7 रन बनाए 12 गेंदों पर, शी स्ट्रगल्ड अ बिट, जबकि सहर 1 रन पे नॉट आउट रही एंड देयर वाज 7 एक्स्ट्रास। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को संभाले रखा अगर हम रावेल का जिक्र करें, और इनिंग्स के आगाज़ करने आई थी और इख्तिताम तक खड़ी रही, लड़ती रही अपनी टीम के लिए और कीमती 68 रन
उन्होंने बनाया, उनका भरपूर साथ निभाया इब्तदाई ओवर्स में कोमल ने, जिन्होंने खुद भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 23 रन उन्होंने बनाए। ज़ुफ़िशा जिन्होंने 11 रन की इनिंग खेली, स्ट्रगल करती हुई थोड़ी नजर आई और एक शानदार गेंद के जरिए राउंड द लेग्स बोल्ड हुई, जबकि फिजा अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड आउट हुई क्योंकि उनके बल्ले से इतने ज़्यादा रन हासिल नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान की टीम। और उसके बाद शहरबानो, जिनको एक ही गेंद का सामना करने का मौका मिला और आखिरी 2 गेंदों पे कीमती 10 रन समेट के 125 रन तक पहुंचाया पाकिस्तान की इनिंग्स को। बेशतर ऑप्शंस इस्तेमाल किए आज साउथ अफ्रीका की कैप्टन मीका वैन वर्स्ट ने। मिया लेनोर एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करती हुई नजर आई, नपी तुली गेंदबाजी की, 23 रन देके 1 विकेट उनके नाम रही। एशली वैन वेक लेग स्पिनर, 1 विकेट उन्होंने अपने नाम की, सिर्फ 26 रन कंसीड करके, जबकि दीपे भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुई। और उसके बरक्स मबासा, मेलिसा, रेंसबर्ग या मीके कोई विकेट हासिल करने में नाकाम रही। 63 रन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप मिली आज पाकिस्तान को कोमल और रावेल की सूरत में। और उसके बाद विकेट्स गिरने के सिलसिले का जिक्र करें तो 79, 99 और 113 पे पाकिस्तान की 4 विकेट गिरी। इनिंग्स आगाज करने आई थी रावेल और कोमल और पहले ही ओवर से कुछ किस्मत ने उनका साथ दिया, बड़े शॉट्स देखने को मिले और पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर पर अगर हम रावेल का जिक्र करें, कदमों का इस्तेमाल किया था और जो दायरे के अंदर फील्डर्स मौजूद थे उनके ऊपर से खेल के रन हासिल किए। और इस ओवर में एक बार फिर दिखाया कि ऑफ साइड पे की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर कंसिडर की जाती हैं। कॉर्नर बाउंड्री को क्लियर करके भी 6 रन हासिल किए थे मेलिसा, जिन्होंने रन बनाने के सिलसिले को थोड़ा रोका था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कोमल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले ग्राउंड के चारों ओर। और यहाँ पैडल स्वीप करने के पहले तो बाउंड्री हासिल की और यही शॉट अटेम्प्ट करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और पैड्स को टकरा के गेंद स्टम्प्स को जा टकराई और एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा इस अंदाज से। स्पिनर ने ज़ुफ़िशा नंबर 3 पे बैटिंग करने आई और झलक दिखलाई, वो भी एक अच्छी बैटर है, लेकिन एक खूबसूरत गेंद के जरिए वो अपनी विकेट गंवा बैठी और बिल्कुल हैरान और परेशान नजर आई इस एशली वैन वीक की गेंद पे। राहिमा, जिन्होंने कुछ झलक दिखाई बड़े शॉट्स खेलने की, किस्मत ने उनका साथ दिया जब इनिंग्स के आगाज़ में ही उनको एक मौका मिला था, लेकिन रावेल दूसरी जानिब खड़ी रहीं, डटी रहीं और ग्राउंड के चारों अतराफ खेल के रन हासिल किए और इस चौके के जरिए अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी हासिल की। एक अच्छा शॉट था, राहिमा ने पेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगली ही गेंद पे एक बार फिर बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठी, जब एक्स्ट्रा कवर की फील्डर दौड़ती हुई आई और कैच हासिल किया। रावेल ने बाउंड्री के सिलसिले को जारी रखा और आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और इनिंग्स की आखिरी 2 गेंदों पे पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए 6 रन हासिल किए और आखिरी गेंद पे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से खेल के 4 रन हासिल किए और इसी के साथ साथ 125 का फाइटिंग टोटल हासिल करने में कामयाब हुई पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम इस 5 मैच सीरीज़ के दूसरे मैच में। और अब देखना होगा कि क्या साउथ अफ्रीकन टीम, जो कि ऑलरेडी पहला मैच अपने नाम कर चुकी है, वो इस हदफ तक बआसानी पहुंच सकेगी या नहीं। 68 रन के साथ नुमाया रही रावेल, 23 रन बनाए आज कोमल ने, जबकि 11 रन बनाए ज़ुफ़िशा ने। बॉलिंग का जिक्र करें तो मिया, वैन वेक और दीपे ने एक एक विकेट समेटी, जबकि फिज़ा फयाज रिटायर्ड आउट होकर इनिंग्स के आखिरी ओवर में डगआउट में वापस गई। वक्त हुआ जाता है इनिंग्स ब्रेक का और उसके बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से फॉर द सेकंड इनिंग्स ऑफ द सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच बिटवीन पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम।
Welcome back once again from the National Bank Stadium, Karachi, where University of Lahore presents Revaj. Pakistan versus South Africa Women's U19 series is going on, and the first innings has been done and dusted. 126 is the target which Pakistan Women U19 have set for South African girls to chase down, and their opening batters are ready on the boundary line to make their way to the center. It's been a very good performance by Pakistani girls, setting up a fighting total of 125, much better than their performance in the first match. Ali Yunus is alongside me. Ali, what do you make of the first innings progress which Pakistani girls have shown? Yeah, as you called it right, it is a much improved performance from the last game. But I still believe they could have easily gone and get 15 or 20 more runs after the start that they got. In my opinion, they are 15 runs short, but still they've shown improvement in this game, and that's what we want to see, improvement in every game they play. And I'm really excited to see the two left-arm fast bowlers of Pakistan, Shahbano being one of them. They come from Lodhram, both the left-arm fast bowler, they come from Ali Threen Academy from Lodhram. So a huge participation that academy has in women's cricket, also giving them opportunity to learn and groom themselves. Bowled her, beautifully done, on target, and she gets her first wicket of the very first delivery. What a start for Shahnur. Wonderful. Doesn't get any better than this. That's why I said I'm really excited to see these two left-arm fast bowlers, because they were brilliant in the previous game. And over here also, starting off with a Jaffa. No worries at this end. It's the other end that matters for Pakistan. On target, a little bit of swing into the right-hander. On target. Fantastic. That's a dream stuff for a left-arm fast bowler getting a delivery like this. Chris Murray gone without scoring. Pakistan are off to a great start. It's a very important wicket too, because Chris Murray contributed brilliantly for her 22 in the first match, and now she gets out very cheaply of the very first ball of the run chase, and Shahbano just bowls a peach. Another good delivery, driven straight to cover. Captain does the tidying up there. So this is good start for Shahbano. Absolutely love the energy. That's what you want to see, that competitiveness, these young girls. And now it will be a challenge for South African. Didre Van, the new batter in, because last time they had a good opening partnership. Drives that, and just a little bit of fumble allows the ball to go through, and they will take the second run quite easily in the end. This is not required by Pakistan girls, because Shahbano has started off brilliantly, and the fielders need to support the bowlers. Absolutely. Yeah, she's disappointed. Played well in the previous game, but there's nothing much she could do. It was swinging in. Great line, great length. Well, look at this. This time tapped away to third for a single. Yeah, it was a very good delivery. The very first delivery that she bowled to get rid of Murray, because it really reminded me of Shaheen Shah Afridi. Up front, have a look at that. Typical left-armer's delivery up front. And didn't she enjoy that? She was pumped up. Absolutely. And something very impressive about her, she lets the ball swing. Again, oh, okay, fine, this is not the right line. But probably she's letting the ball swing. She's giving it enough air. She's bowling those floater. So let the ball swing. That's what you want to see. And the energy that these two left-arm fast bowlers that I saw in the previous game, very, very impressive. I think Pakistan's fast bowling
the future of Pakistan fast bowling looks very, very promising when I look at these two fast bowlers. Inside edge, could have gone on to hit the stumps, could have been anything there. Quite a few times we've seen those inside edges shattering the stumps, but that time around the batter was quite lucky. So there's a hint of movement available in the very first over, and it's important to control this new cherry up front. Good delivery. Played away to mid-on for no run. A dot ball to finish the successful first over. 5 for 1 South Africa. A beautiful view this of the City of Lights here in Karachi. And it's Al Batal Production and Technologies bringing all this action live from the National Bank Stadium. Very historical stadium. This hosted memorable matches for the last quite a few decades, and still continuing. A bit of a repair work has been done in terms of the construction, the atmosphere, and all the things. The infrastructure has been developed. Mahanur Zaib will share the attack. Previously she bowled the first over, and now she's bowling the second over. Ow, was there a nick? A wild swing by the batter, Venter. Venter will be full of confidence because she's played a very good innings, 40 odd runs in the first match. Have a look at that, swing and a miss. Yeah, that's what happens when two quality sides meet. Yeah, good captaincy here. In the previous game we saw a spinner, off spinner starting off with the new ball, and here Pakistan captain opting for two fast bowlers bowling from either side. Lifted beautifully in the air all the way, 6. Gets the appreciation from the dugout, and that really was lifted beautifully by Venter. Absolutely, great pickup shot. The length was the key because she's looking for that swing. She didn't find any swing, and in doing so gave it up. Gave it a very easy delivery. All she had to do was just get the connection right, and the pace of the ball taking it away for all the way for 6. Oh, wrapped on the pads, maybe pitching outside, shake of the head by the umpire immediately. Only thing would have saved her could have been pitched outside leg. Yeah, that's the only thing going in the favor of the batter. But interesting approach from Venter. She's going after everything, anything that's coming in her zone. Let's have a look. Oh, I tell you, it's marginal. Marginal, I would say. Well, this is how she plays, Venter. She likes to take on the bowling from the Voorst goal. Worked away, straight to short fine. Good bit of fielding there. Yeah, no matter, she's gone for a 6 in this over. Yeah, it's a Pepsi are proud partners in this series. But still, she got to hold on to that confidence from the last game. Yes, she did not get a wicket, but she bowled really well in the previous game. It's all about being confident, keep fighting. Oh, gets outside edge, thick outside edge of the bat there. So that was pretty much full, that delivery, outside the office stump. Yeah, a little too full. It has to be a combination of great line and length. Like Sherbano did in the previous over, it was a great combination of both. Another sponsor, Wigotel Mobile. Wonderful, excellent.
We want to see more and more corporate partnerships for these young girls. Poor line that. Just trying to mix it up. When she bowled outside the off stump, then bowled it 2 straight. So she has to be careful with the lineup control, especially with the new cherry. Yeah, it can happen to all. You got to remember these are young girls, under 19 girls. They get excited sometimes. But yeah, these series are there just for you to learn. And Rivaj, also one of our proud partners in the series. Got to hold on to your nerves if you can. 2 straight again, this time missed out, went up. It was a good over, nevertheless. 2 bowled, 15 for 1 South Africa. $15 for 1 after 2, our South African under-19 side. FS, we were talking about holding on to those nerves and those excitement. Oh, picked away off the stumps. Took an element of risk there. We'll have to be careful, the batter, especially when she's operating straight with a straighter line. Shaharbano. Sana Fatima, Pakistan Women national player. Not just the player, she's the captain. She's an inspiration. Munib Ali alongside her also, the wicket-keeper batter. Keeping an eye on this game. Beaten outside the off-stump. So talking about the nerves that I was, even the South African fast bowler Murray, she got excited today. He was bowling those short deliveries. She was brilliant in the previous game with that line and length, but in this game she was quite short. She gave away too many easy deliveries to score off. That's why South Africa didn't get those early wickets, because she got excited. She wanted to do a lot of things too early. In order to do the experiment, you got to have consistency as well. So it's not that easy, yeah, but these girls are very young. It's only a learning curve for them. So by the passage of time, they can err in line and length at times, but they can only get better because they've shown a lot of promise. Full toss driven through the covers and finds the gap as well into the boundary. This is a very good boundary for South Africa. Yeah, that's the excitement I was referring to. It's very easy, you get excited and look to all those magical deliveries. That's not going to happen on every delivery. This one, she was looking for that swing, didn't get it, and instead gave away an easy full toss outside the off stump, and the batter had no issues putting it to the boundary. Rensburg is off to a good start. So if you can only manage to control your excitement, it will make a great difference between you and the others at this level. Well, when runs start coming from the both ends, then it is kind of a worry for the bowling side. And this is what we are witnessing, because now both of the batters of South African girls are looking to score runs, and that too quickly. So this is going to be a kind of a challenge for these opening bowlers of Pakistan. Good delivery. A dot ball to finish the over number 3. It's 20 for 1 South Africa.
When you have to stop the opposition from getting the runs in the second innings, then you have to pick up wickets up front. Full toss, couldn't get quite hold of that one. The batter, Winter. Pakistan did get a wicket of the very first ball, but after that, it is good bit of recovery for South Africa. Yeah, but I would say very good captaincy also. Very good plan that Pakistan has come in, especially when fielding, because we saw a spinner being bowled very early in the previous game. Here, the captain is giving opportunity to the faster bowlers to get maximum out of it. Yes, go on, done! Brilliant! Fantastic! That is magical. That is what we look for from a young fast bowler. 100% for the accuracy. Right on target, and she gets her goal. Another wicket here going down for South Africa. This is the side-on angle. No problem with the front foot whatsoever. But the problem for the batter was that it really was on target. You miss it. She went across the line and paid the price. Winter. She was absolutely the player of the match in the previous game, but now she managed only 9 runs. Yeah, the plan absolutely working. Just loved this plan that the Pakistan team has come out with. Giving the opportunity to the left-arm fast bowlers to get maximum out of the surface and the conditions, because once the ball gets older, it gets very difficult for the faster bowlers, especially here in National Bank Stadium, Karachi. So to maximize what they have, this is the right time. And it's paying off. Both the faster bowlers getting a wicket each, FS. Absolutely. Mieke Voorst, the captain of the side, makes her way to the center at number 4. And she will have to face the music. The plan is pretty obvious by the Pakistan bowlers. At times they can earn in line and length a little bit, but the plan is pretty obvious. Bowl it full. Pitch it up to the stumps. We haven't seen extravagant movement from the surface or either in the air as well. So there is only some sort of movement available, and make use of that to good effect. Pepsi are proud sponsors, and Fizza Fiaz has joined Fatima Sana. Fizza Fiaz happens to be the Pakistan Women team's coach. Nicely bowled again. This is the channel, this is the line. Yeah, I'm just loving that the captain of Pakistan national side, the mentor also here at the game. Just wonderful to see. I'm sure this will do world of good to these young girls. And if they're looking at such performances like these, I'm sure he will have an eye on this young girl. In fact, both of them, Sharbano and Asaib, they've been brilliant. Love the energy, love the aggression. Almost through. Bowled pretty full there, just worked the way, squeezed away for a single. Yeah, I'm sure Wahab and Masroor and Musrafia, Heather, they must be very proud. Seeing this effort and this energy being put by these young girls, because they've initiated this technical, they've appointed and provide consistent technical, tactical, physical and mental development plan to these young girls. This is what you want to see. Yeah, when you do that all, then the results are pretty obvious. And this is what I'm presuming, that the performance of these young girls at the moment is just getting better after every series. Previously, as we have mentioned before, time and again beating Bangladesh. And now it's not that bad. Yes, they lost the first game, but they're looking very good in the second match. 4 bowled, 22 for 2.
Yeah, talking about the development of women's cricket at this young age. I've been told, in fact I've seen it, that high performance training camps were conducted with a strong emphasis on skill development, game awareness, which is very important, match preparation, fitness and fielding standards. Players were provided with enhanced coaching, performance analysis, just what you want to see at this young age, FS. Absolutely. Not that time around though. Hurrying in line, down the leg side, bowling a wide. So the line is very important. You have to be consistent with your lines and lengths, especially when it's not happening much off the surface. Then you have to be accurate with your lines and lengths. Absolutely. But at the moment, probably they're getting that hint of swing. You tend to get a little greedy. Or it just can be a plan as well by the Pakistan bowlers, just not to let the batters settle down against one particular line and length. They're trying to just mix it up. But at the moment, it's working. Yeah, once you get a swing, a little bit of swing, we were talking about it, and it is just being very, very effective for Pakistan fast bowlers. They got 2 wickets, 2 bowls. Let's have a look. A little bit of swing. Just because she was on target with line and length, she got through the batter. And again, this was a false shot. This was a very poor shot. But you got to give it to the bowler from sticking to that line and length. Wonderful. A touch back of length on that occasion. Just altering the length a bit. She'll be very effective if she bowls full. Already has picked up a wicket with the start. And we are still into the power play, so most of the fielders are inside the 30-yard circle. The pitch curator for PCB. That was a Yorker. So she's obviously trying to bowl that magic delivery. Yeah, good to see young girls coming and supporting young girls, other young girls. And good to see the Pakistan main team players also coming in the stadium and looking at the performance of these young girls. Pakistan under-19, they're up against a challenge of number 2 side, South Africa. Remember, they played the final of World Cup. They were the runners up there, so they're a very good side. And FS, South Africa may be under-19 women's side or the main side. They love coming to Pakistan because we give them such a practice that they at least go and play the final of the main event. It happens twice with Pakistan, with South Africa main team, that they come to Pakistan before a main event. They go and play the main event, and at least they go till the final. Yeah, probably this is the way to go for South Africa. And this must be part of their plans. Some VIPs there, so people joining in, especially to watch this second match, which is always a good sign. Oh, she was walking down the track and yoked herself in the end. Pretty much full that delivery to finish up. 5 bowled, 24 for 2 South Africa. And with that, we're going to have a change in the commentary. To tell you more about it, it's going to be Rana Ashfaq, joined by Zishan Khalid. बहुत शुक्रिया एफएस मलिक और अली यूनुस। पाकिस्तान की गेंदबाजों का बहुत शानदार आगाज़ और 126 का टारगेट जो ज़रा कम दिखाई देता था इनिंग्स ब्रेक में, वो अब ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे 140 से 145, क्योंकि साउथ अफ्रीका suffered a bit, 24 for 2 and 5 overs. Zishan. एब्सोल्युटली राना साहब, एक अच्छा आगाज़ पाकिस्तान वुमेंस टीम की जानिब से, चाहे हम बैटिंग का जिक्र करें या बॉलिंग का जिक्र करें, दोनों ही बॉलर्स एक एक कामयाबी समेटने में कामयाब हुई। और अब गोया के पावर प्ले का एक मजीद ओवर बाकी है, लेकिन अब रोजीना जिनसे नई गेंद से गेंदबाजी कराई थी, अब वो आई हैं एज एन ऑफ स्पिनर गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखने के लिए। जी हाँ, रोजीना की जिम्मेदारी ये है कि न सिर्फ उसी रन रेट को जो है वो
बरकरार रखें जो पहली बॉलर्स ने रखा है और साथ साथ विकेट लेने की कोशिश करें। राइट आर्म बॉलर हैं और इनकी गेंद को लपेट के मारा है मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान। अच्छा स्ट्रोक मगर अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। यंग गर्ल स्प्रिंट करती हुई गई और काफी रास्ता तय करने के बाद गेंद को रोका। या मेहनत और उमंग नजर आ रही है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जानिब से। महानूर थी डीप मिड विकेट पे और अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए कीमती रन्स बचाने में भी कामयाब हुई। फायदा उठाना चाहेंगी यहाँ पे दोनों ही साउथ अफ्रीकन बैटर्स पावर प्ले के आखिरी ओवर का, और यहाँ मौका मिल सकता है पाकिस्तान को एक और कामयाबी समेटने का। जी हाँ, रेंसबर्ग अब तक 11 रन बना चुकी हैं और उनके कैप्टन ने अभी सिर्फ 1 ही रन बनाया है। बेहतर गेंद, विकेटों में गेंद करने का ये फायदा जरूर होता है कि बैटर रिस्क लेते हुए जरा सोचती जरूर हैं कि एलबीडब्ल्यू और बोल्ड इन प्ले हो सकता है, और देखना है कि क्या इसी लाइन और लेंथ को मेंटेन करेंगी या कुछ तब्दीली लाएंगी लाइन और लेंथ में। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस दौरान 1 रन का मौका बहरहाल मिला। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की तारीफ करनी होगी अगर हम साउथ अफ्रीकन बैटर्स का जिक्र करें, और इसी फुर्ती से विकेट्स के दरमियान दौड़ी थी पिछले मैच में भी, ऑल्दो 2 विकेट्स भी उन्होंने रनआउट के जरिए गंवाई थी। इस मरतबा इंतजार किया, बैक फुट पे खेली मगर फील्ड को पूर्ण कर सकी। जी हाँ, 2 विकेट्स इनकी रनआउट के जरिए गिरी थी, एक डायरेक्ट थ्रो पर और साथ साथ एक मरतबा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बॉलर ने अपना बूट गेंद की लाइन में लाते हुए आउट किया था बैटर को। ये बड़ी ऊंचाई से इस मैच को मुलाहिजा कर रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। स्वीप किया, अच्छा स्ट्रोक मगर प्रोटेक्शन ले रखी है इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए, मगर फंबल हुआ जिसके सबब दूसरे रन की ख्वाहिश थी, मगर 1 रन के साथ ही आखिर में मुतमिन हुई। यहाँ से कुछ गेंदें कबल अपने बाएं जानिब दौड़ी थी और अब दाएं जानिब दौड़ के इस बड़े शॉट को रोकने में कामयाब हुई एक बार फिर महानूर, और अच्छा आगाज रोजीना का। अब तक कोई बाउंड्री नहीं कंसीड की पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में। बिल्कुल, सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी आपने कहा और बैटर ने कहा ये लीजिए, और डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर चौका लगाया, तो अच्छा अंदाज पावर प्ले को ख़त्म करने का। 31 रन हो गए हैं साउथ अफ्रीका के 2 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैचों की अंडर 19 वुमेन क्रिकेट सीरीज नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रेजेंट्स रिवाज पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 ये इवेंट है। दूसरे पावर प्ले का इशारा किया अंपायर ने। पावर प्ले में पाकिस्तान को 2 विकेट्स मिली और ये उनमें से पहली विकेट। उसके बाद एक जोरदार स्ट्रोक खेला था बैटर ने जो कि बाउंड्री से बाहर गया, लेकिन उसके बाद फिर शानदार डिलीवरी पाकिस्तानी बॉलर की जानिब से और दूसरी बैटर आउट हुई जनूबी अफ्रीका की। ये बड़ा ही खूबसूरत शॉट पावर प्ले की आखिरी गेंद पे जो कि रोजीना को लगाया बैटर ने। तो साउथ अफ्रीका 31 रन 6 ओवर, 2 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की कारकर्दगी 6 ओवर्स का अगर मुवाजना करें इससे काफ़ी बेहतर थी, कोई विकेट नहीं गिरी थी पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तान की, और रन्स भी 37-39 के करीब थे। फुल टॉस, बॉल ऐसी थी जो कह रही हो कि आइए मुझे मारिए, मगर बैटर गैप तलाश न कर पाई। यह तोहफा फराहम किया था यहाँ पे बैटर्स को जिसका फ़ायदा ना उठा सके यहाँ पे बैटर, क्योंकि उमूमन हम देखते हैं जब फुल टॉस मिले और दायरे के बाहर फील्डर भी ना मौजूद हो तो बैटर्स फ़ायदा उठाते हुए रन हासिल करते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका और सिर्फ डॉट बॉल ही खेल सकी यहाँ पे बैटर। उमूमन हम क्रिकेट का या ज़िंदगी के मज़ीद शोबों का जिक्र करते हैं, सीखने का अमल जारी रहता है और 3 बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिली पाकिस्तान टीम की जानिब से आज। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है और ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक है क्योंकि मिड ऑफ भी मौजूद थी और एक्स्ट्रा कवर्स भी, मगर एक दफ़ा जब गेंद ने इन फील्डर्स को या दायरे को क्रॉस किया तो फिर आउटफील्ड बहुत तेज़ है और बाउंड्री से बाहर गई गेंद। एक उम्दा स्ट्रोक जिसमें ज़्यादा कुव्वत नहीं लगाई इस बैटर ने, मगर टाइमिंग और प्लेसमेंट बड़ी आला। या जितनी तारीफ की जाए इस शॉट की कम है क्योंकि इससे कबल एक ख़राब गेंद का फ़ायदा ना उठा सकी थी, लेकिन अगर आप इस गेंद का मुलाहिजा फरमाएं तो इतनी ख़राब गेंद नहीं थी, अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पे जा गिरी थी और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अंदर की जानिब भी आई, लेकिन इसको खड़े खड़े अपने लिए रूम बनाते हुए गैप तलाश किया और खड़े खड़े ड्राइव कर दिया इसको एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से। कोशिश भरपूर की मिड ऑफ फील्डर ने, लेकिन इतना खूबसूरती से टाइम किया हुआ शॉट था कि 4 रन मिले यहाँ पे रेंसबर्ग को। दोनों बैटर्स अब एक अच्छी शराकत बनाने में कामयाब हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट का एक बार फिर बड़ा अच्छा मुजाहिरा।
जब तक कंट्री साइड्स में गेंद को रोका जाए। 2 रन दौड़े इन दोनों के दरमियान। अब 17 रन जुड़ गए हैं 19 गेंदों पर। 2 विकेट्स पीस पे गिरने के बाद थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, मगर अब कंसोलिडेट वर्क जारी है। या कोशिश करनी होगी यहाँ पे पाकिस्तान टीम को कि कोई बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होने ना दें, और ये खेलते ही पहले उन्होंने फैसला कर लिया था कि पहला रन तेजी के साथ निकलें, जिसके बदौलत उनको मौका मिला दूसरा रन मुकम्मल करने का। और हमेशा बड़ी अहम होती है कॉलिंग, फिर एक दूसरे को जानना जिशान कि कौन सी बैटर्स विकेट पे मौजूद है, उनकी आपस की हम आंगी कैसी है, दोनों को एक दूसरे की रनिंग स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। और यही वजह है कि साउथ अफ्रीकन इस मामले में हमेशा, चाहे वो उनके मेंस हों चाहे उनके विमेन हों, ऑलवेज एक फील्डिंग और दूसरा रनिंग बिटवीन द विकेट उनका हॉल मार्क या उनका एक ज़बरदस्त पॉइंट रहा है, अगर हम माजी का भी जिक्र करें। और करंटली भी ये कोशिश जारी है, वो कि आज फील्डिंग में भी कुछ लैप्सेस हमने साउथ अफ्रीकन फील्डर्स के देखे, बट इट हैपन्स। और ये हम कहते ही आ रहे हैं कि चूँकि ये अंडर 19 गर्ल्स हैं, यकीनन इनसे गलतियाँ मुतवक्के हैं, मगर इनके साथ अच्छी मैनेजमेंट्स मौजूद हैं और फिर मैचेस इनके टेलीवाइज हो रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस हासिल होगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि कैमरा उन पे है, शी इज स्माइलिंग अवे। फिर तेजी के साथ सिंगल हासिल किया लॉन्ग ऑन की जानिब, और एक प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ नजर आया है ये साउथ अफ्रीकन वुमेन अंडर 19 टीम के लिए। 8 रन समेटे दोनों ही बैटर्स ने मिलकर। 7 ओवर्स हुए मुकम्मल, साउथ अफ्रीका 45 2 विकेट के नुकसान पे। ये अब तक का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैरी और वेंटर कुछ खास न कर पाई। वेंटर जिन्होंने पिछले मैच में टॉप स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के लिए, वो आज महज 9 रन बना पाई, मगर रेंसबर्ग अच्छी बैटिंग कर रही है 19 रन के साथ, जबकि मीक जो हैं वो 7 रन पर नॉट आउट हैं 11 गेंदें खेलने के बाद। वुमेन क्रिकेट जिसका पहला इंटरनेशनल मुकाबला वे बैक इन 1934 खेला गया, वही अगर मेंस की बात करें तो 1877-78 में इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया पहला। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की वुमेन टीमों के दरमियान पहला मुकाबला खेला गया था, क्योंकि जो गैर सरकारी मैच या गैर इंटरनेशनल मैच है उसकी तारीख जो है 1700 में मिलती है, 1745। बहरहाल अब मर्दों के शाना बशाना वुमेन भी जो हैं वो क्रिकेट में झंडे गाड़ रही हैं, और जिस तरह हम बाबर आजम का, विराट कोहली का, वेव रिचर्ड्स, लारा वगैरह का जिक्र है, इस तरह अलीसा पेरी, मैथ्यूज, इनका जिक्र भी जिशान होता है। बिल्कुल, अगर आप इन क्रिकेटर्स से रोल मॉडल्स का जिक्र करें तो आपको बेशतर ऐसी वुमेंस क्रिकेटर्स के नाम गिनवा सकेंगी जो आज अपने मुल्क का नाम रोशन करती हुई नज़र आती हैं। ज़रान खुशकिस्मत रही यहाँ पे वैन वीके, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद काफ़ी नीचे की जानिब रही और काफ़ी बेंड होके इस गेंद को खेलना पड़ा कप्तान वैन वीक को। अच्छा शॉट, बड़ा खूबसूरत शॉट। इस स्ट्रोक के लिए दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, सेव योर एनर्जी प्लीज। खूबसूरत चौका ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेली यहाँ पे वीके वैन वर्स। उनको अंदाजा था कि लाइन ऑफ अटैक ऑफ स्टंप के बाहर ही था रोजीना का, और इसको खड़े खड़े ड्राइव किया और गैप तलाश भी करने में कामयाब हुई। अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए फिजा के बाएं जानिब से गैप तलाश किया और मजीद 4 रन समेटे अपनी टीम के लिए। ये कीमती रन न सिर्फ वेनवर्क के एतमाद में इजाफे का सबब हैं, बल्कि साउथ अफ्रीका की पोजीशन को भी बेहतर करने में कारगर साबित होंगे, क्योंकि 2 विकेट्स गिरने के बाद और रन आउट के कुछ डाउन होने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन कुछ मुस्तहकम हो गई थी अगर कंपेयर करें, मगर अब दोबारा ये मुकाबला सारा व बराबरी की पोजीशन में आ रहा है। गो के रन रेट अभी भी जो चाहिए वो 7 के आसपास है, 6.82, मगर साउथ अफ्रीकन के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये विकेट पे मौजूद रहीं दोनों बैटर्स और आने वाली बैटर्स, तो फिर बड़ी हिट्स ये खेल सकती हैं। जगह बनाई और अच्छा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुई, मगर सिर्फ सिंगल मिलेगा इस बार। क्या तलाश किया ज़रूर, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद थी जुल्फिशा, तो 5 रन समेटे इस ओवर में रोजीना के। 8 के बाद साउथ अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 44 2 विकेट्स के नुकसान पे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़बरदस्त अंदाज में वुमेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। वुमेन के मुकाबलों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज भी मिल रही है। न सिर्फ ये कि इंटरनेशनल जो सीरीज़ हैं, चाहे वो अंडर 19 की हों, चाहे हमारी मेन टीम की हों, उनके साथ साथ जो डोमेस्टिक वुमेन है उसे भी बेहतर अंदाज में टेलीवाइज किया जा रहा है, बेहतर अंदाज में उसकी ब्रॉडकास्टिंग और कवरेज की जा रही है, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ये चीज़ देगी। अपील, मगर फ़ौरन ही उन्होंने अपनी अपील को मफल भी कर दिया, थोड़ा बहुत मफल्ड हिज अपील, हर अपील इनफैक्ट, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया गेंद लेग स्टंप से बाहर गिरी है। बिल्कुल अच्छी लाइन ऑफ अटैक से गेंदबाजी कर रही है महानूर। अगर हम पिछले ओवर का भी जिक्र करें तो उन्होंने स्टंप्स को ही टारगेट किया था और आगे गेंदें कर रही हैं ताकि उनको जो हवा चल रही है इसके बदौलत स्विंग हासिल हो सके। जगह मौजूद थी, एंड शी गोज अप एंड ओवर, कोई होल्डिंग बैक नहीं, कोई उनके जहन में हाफ मेजर्स नहीं। खूबसूरत चौका इस मर्तबा वेनवर्क का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटर कंसिडर की जाती हैं। मीका वैन वर्स्ट कप्तान भी हैं जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन की टीम की, और यहाँ भरपूर इनको वक्त मिला क्योंकि काफ़ी पीछे गेंद पटकती थी और इस रीच का इस्तेमाल करते हुए इसको दानिस्ता तौर पे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुई और उनको पता था कि यहाँ पे कोई डीप पे फील्डर भी मौजूद नहीं, इसका फ़ायदा उठाते हुए 4 रन हासिल किए। बड़ा अच्छा शॉट, एक रैंक बैट शॉर्ट पिच बॉल थी और इस मर्तबा उतनी ही अच्छी गेंद, उतना ही गेंद को आगे गिराया मानूर। यू ब्यूटी, व्हाट ए वैलिएंट एंड गैलेंट कमबैक बाय मानूर आफ्टर गेटिंग हिट फॉर अ बाउंड्री। परफेक्ट सेटअप कंसिडर किया जाएगा महानूर का। इससे पहले एक पीछे गिरी हुई गेंद थी जिसका बैटर ने फायदा उठाया, लेकिन अगली ही गेंद उतनी ही आगे कर दी और स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया था। मीका वैन वर्स्ट ने अपने आप को रूम दिया और उसके बाद गेंद की लाइन और लेंथ को जज ना कर सकी। लेग स्टंप के जड़ में गेंद आ गिरी और स्टंप्स को जा टकराई और बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुई मानूर। तो कप्तान 16 रन बना के डगआउट पे वापस जाते हुए, और इसी तरह साउथ अफ्रीका को मिला तीसरा नुकसान 48 के स्कोर पे। मैंकवाना नई बैटर हैं जो विकेट पे पहुंची हैं, मगर बहानूर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक उस मौके पर जब पार्टनरशिप अच्छी बिल्डअप हो रही थी, पार्टनरशिप को ब्रेक किया। ये राइट हैंडेड बैटर हैं मैंकवाना मरूरी, अंपायर से इस वक्त गार्ड ले रही हैं। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में 5 मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरा मुकाबला है मौजूदा सीरीज़ का ये, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम सीरीज़ को 1-0 से लीड कर रही है इस वक्त। मगर इस मौके पर इस मैच में पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन ने अपने लिए एक बड़ा अच्छा मौका बना लिया है सीरीज़ को बराबर करने का। बहानूर रनिंग अवे, एक और अच्छी गेंद अपील की, मगर फिर फौरन ही इस बार भी उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ऐसी बात नहीं है कि अंपायर को ज़्यादा मुतासिर करने की कोशिश की जाए, लिहाजा उन्होंने एक तरह से अपने आप को फिर रोक लिया। क्या बेहतरीन फैसला ऑन फील्ड अंपायर का भी, क्योंकि उमूमन अब आप देखते हैं कि गेंद जब इतना आगे पिच हो और पैड्स को जा टकराए तो फैसला उमूमन बॉलिंग साइड के हक में जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो क्लियरली वाज पिचिंग डाउन द लेग साइड। उमूमन ये फैसले बैटिंग साइड की जानिब जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मगर गुड टू सी दैट कि महानूर रनिंग इन एवरी टाइम, बड़ी मेहनत बड़ी जांफिशानी के साथ बॉलिंग कर रही हैं। और मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं इन्हें करार दूँ पाकिस्तान ब्लिजर्ड, जो कि वकार यूनुस को कभी करार दिया गया था। ये बोल्ड जो उन्होंने किया बड़ी खूबसूरत गेंद पर, एंड वकार वाज वेल नोन फॉर दोज यॉर्कर्स, जो कि ये उन्होंने यॉर्कर की। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हु चेंज्ड हिम बूरे वाला एक्सप्रेस। भूरे वाला एक्सप्रेस जो है वो उनको नहीं कहा गया था, भूरे वाला ब्लिजर्ड कहा था चिश्ती साहब ने जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। बट समबडी चेंज्ड इट। 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 49 रन, 3 खिलाड़ी आउट।
ऐसी चेंजेस भी आ जाती हैं, जैसे दिल स्कूप जो है वो दिलशान से पॉपुलर है और सब कहते हैं दिलशान, मगर डगलस मोरिलियर जो थे उन्होंने उसको खेलना शुरू किया था बड़ी अथॉरिटी के साथ, और इंडिया वो टीम थी जिनको उन्होंने वो मारने शुरू किए स्कूप्स वगैरह। इसी तरह बस एक्सप्रेस का ज़माना आया फिर तो सब ने उनको वकार को भी बुरे वाला एक्सप्रेस कहना शुरू कर दिया। वैसे ब्लिज़र्ड का उर्दू का तर्जुमा बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे उसको, बर्फानी तूफान। ओह माय गॉड। 10वें ओवर का आगाज हो रहा है। अच्छी गेंद, पाकिस्तान की गर्ल्स जो है इस वक्त अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं ज़िशान। बिल्कुल, अगर हम दोनों ही बॉलिंग टीम्स की परफॉर्मेंस देखें तो हमें रेगुलर चेंजेस नज़र आ रहे थे जब साउथ अफ्रीकन टीम बॉलिंग कर रही थी, जबकि पाकिस्तान टीम की कप्तान का जिक्र करें तो उन्होंने सेटल स्पेल दिया है अपने बॉलर्स को। यहाँ पे रोजीना के इब्तदाई ओवर्स के बाद अब वो मजीद नबी तुली गेंदबाजी कर रही हैं, और उमूमन आसान नहीं होता नए आने वाले बैटर के लिए फ़ौरन ही कंडीशंस में एडजस्ट करना, और यहाँ मौका मिलता है बॉलिंग टीम को मजीद डॉट बॉल के साथ दबाव बरकरार रख के एक और विकेट हासिल करने का। बिल्कुल आपकी बात वजह है, और ऐसे मौके की तलाश में भी टीम्स होती हैं और प्लेयर्स को चाहिए भी कि फ़ायदा उठाएं, क्योंकि न सिर्फ अब साउथ अफ्रीका को विकेट्स बचाने के लिए जाना है बल्कि साथ साथ जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको भी निगाह में रखना है। मबादा ये कि वो विकेट पे तो मौजूद रहे मगर रन रेट फिर 9-10 का हो जाए, जो कि मुमकिन ना हो अचीव करना आखिर में। तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान की गर्ल्स के लिए कि यहाँ पे विकेट्स हासिल करें। इस बार तो रन आउट, थ्रो दोनों तरफ किया गया, पहले बॉलर के पास थ्रो आया, उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पे किया मगर इस दौरान 2 रन बन गए। मौका ज़रूर था बॉलिंग एंड स्ट्राइकर्स एंड पर रन आउट करने का, क्योंकि काफ़ी देर से फैसला किया था बैटर ने दूसरे रन के लिए वापस आने का। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेली और पहला रन आस्तिकी के साथ निकले, लेकिन मौका था क्योंकि एक शानदार थ्रो थी राइट नेक्स्ट टू द स्टंप्स, और यहाँ पे बॉलर अगर कलेक्ट करके नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे ही थ्रो करती, स्टंप्स को हिट करती तो शायद कामयाबी मिल जाती। बिल्कुल हैरान कौन है कि वाई शी थ्रू दैट वन एट दी बैटिंग एंड रादर देन अटेम्प्टिंग द रन आउट एट हर एंड। बहरहाल शायद थोड़ा घबरा गई या भूल सी गई, ऐसा हो जाता है कभी कभार। 1 रन के साथ 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 52 पे 3। यहाँ पर पानी का वक्फा भी हो जाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। साथ साथ जैसे ही वक्फे के बाद मैच शुरू होगा तो आप सुनेंगे एफएस मलिक और अली यूनुस को।
Welcome back then, folks, after the drinks break. Halfway mark, and South African girls have managed 52 with the loss of 3 important wickets. Kawana will be on strike. She has a lot of responsibility on her shoulders to knit up a partnership with Rensburg. Rensburg already doing a good job on 19 of 23 deliveries. So Pakistan girls' performance up till now has been very impressive, Ali. Absolutely. The energy, I think, is the key. They've shown great energy from ball 1. They've been rewarded by some excellent bowling, excellent line, excellent length, some swing in the air also, some sieve movement. Play and a miss. Good delivery to start off after the drinks break. The left-arm quickies of Pakistan have been just amazing. They've really done their work and they've prepared themselves for this game in particular. Pepsi, our proud sponsors. Yeah, Pakistan definitely are in a great position. Knocks her over, chopped it on. Went for the big, booming, extravagant drive and paid the price. Bottom of the bat into the stumps and gets the reward of that line and length in particular, I would say. The left arm well bowled, and another wicket goes down for South Africa. And another wicket to a left-arm fast bowler of Pakistan. They've been brilliant. Another poor shot. Not really required. As you said earlier, they needed a partnership. But that's not sort of a shot you play when you're looking to build a partnership. Mankava scoring only 4 of 10. Right then, Ashley Wenworth makes her way to the centre with a lot of job to do. She's under the pump and she has done a very good job with the ball in her hands, but now she has a big responsibility to see her team through this phase in particular where Pakistani girls are bowling with their tail up. Squirted away. She's immediately off the mark. That will give her a lot of confidence. Yeah, Pakistan young girls, they surely have surprised South Africans, I tell you, because in the previous game they were a different side. Tonight they are a totally different side. They mean business, they're on target, they've shown great energy. Oh, nicely played, making it into a full toss. She had a little bit of shimmy down the wicket, if you would have noticed. So this is good to do something out of the box when especially the bowlers are bowling with their tail up. Yeah, because these left-arm fast bowlers, they're bowling those floaters looking for that swing. So to get to that swing, it can always be a good idea if you're able to use a couple of feet. That's going to be a wide. Surely is a wide, so you got to give a lot of credit to this 3 left-arm fast bowlers of Pakistan and doing it in front of the captain who was there early on, doing it in front of Fabriaz, the mentor also who was there watching. I'm pretty much sure they will have an eye on these 3 fast bowlers. Playing a miss, nearly got the outside edge there. Well, Ali, when your mentor is a left-arm quickie himself, so you can expect these left-arm quickies to get a lot of inspiration into their bowling, and it is yielding fruit, to say the least. Yeah, I'm pretty much sure he'll have a say in it, but he's mentoring the Pakistan main side. Lots of credit to Masroor Ahmed, who's the head coach of this side. It's not long ago he was having a video chat with these girls. Bullseye! Gone! Gone by all means! What a throw! We had a run out previously in the first game, and now too.
This shows that Pakistan under-19 girls fielding standards have improved a great deal, which is only going to get better by the passage of time. Yeah, wonderful, wonderful from Pakistan girls. As I said earlier, it's the energy that they've brought in this game. They were brilliant in the previous game with the fielding, especially with the direct throws. Over here also, direct throws, yes, go on. By a mile, I would say. Again, a direct throw. They always get your wicket, these direct throws. Out is the signal. South Africa lose another one. Disappointed she must be. Ankaba. Ankaba got out earlier, but she'll be disappointed too. Ashley Wenwick, I presume. She's not out. It's Rensburg. Unfortunate way to get herself out. So it's Nelson on the board after 11 overs. Half of the side back in the dugout. And Ali, it's time for me to take a cup of tea, and Fatima Sana will join you. Yeah, 11 overs done, 55 for 5 are South Africa, and it's good time to have the captain herself in the commentary box. That's her first time, so don't judge her by her commentary stint. We already know what she's capable of in the ground. So we'll have a conversation with Fatima Sana, the captain of Pakistan side. Fatima, सबसे पहले तो वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स पहली बार. थैंक यू सो मच. आई एम लिटिल बिट नर्वस बट इट्स ओके. कोई बात नहीं, हमें आपकी कमेंट्री से ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है जो कि ग्राउंड में आप दिखाती हैं. कमेंट्री पे हम गुजारा कर लेंगे. बिल्कुल, इंशाल्लाह करना पड़ेगा. चांस यही है, करना पड़ेगा. बिल्कुल, हम मैच के बारे में बात करते हैं अभी. इससे पहले लेकिन मैं आपको एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आप 100 खेलने जाएंगी नेक्स्ट मंथ आई बिलीव आप जा रही हैं. हाउ प्राउड आर यू फ्रॉम दैट एफर्ट, जो क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग खेले नहीं है. इनफैक्ट यू आर द फर्स्ट वन जो कि आप 100 में खेलेंगी. अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है. कोशिश यही होगी कि इसको जितना ग्रैब करूं उतना अच्छा है. इवन स्पेशली मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी और काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे. तो कोशिश यही होगी कि अपना बेस्ट दूं और इंशाल्लाह अच्छा करूं. एब्सोल्युटली. एक्सपेक्टेशंस का आपने जिक्र किया फातिमा. एक्सपेक्टेशंस का कोई प्रेशर आप लेते हो कभी, क्योंकि आपको ग्राउंड में जब आपको देखते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, क्या अंदर कोई प्रेशर होता है इस चीज़ का? आई थिंक प्रेशर अच्छी चीज़ है क्योंकि चैलेंज मिलता है और जब एक्सपेक्टेशंस लगती हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर आप मतलब इस तरह से देखते हो कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मतलब आप इतने प्राउड मोमेंट होता है कि आपको सब देख रहे हैं और आप वो चीज़ अचीव करने की कोशिश करो. तो आई थिंक ये प्रेशर और ये एक्सपेक्टेशंस भी मुझे फ़ायदा ही देती हैं. बिल्कुल, और आप पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, इसलिए ये सारा सर्कल ही पाकिस्तान के लिए सही है. और इस मैच के बारे में बात करते हैं. पहले इस सीरीज़ के बारे में बात कर लें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि विमेंस क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है. पाथवेज का हमने बात किया, हमने डायरेक्शंस की बात करती हैं. और जब आप ऐसी सीरीज़ पाकिस्तान में होती है, जब क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बड़ी साइड है इस लेवल पर, जब वो आके खेलते हैं तो कितनी बड़ी चीज़ है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अंडर-19 गर्ल्स के लिए. फर्स्ट तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जब मैं अंडर-19 के साथ आई थी इधर बात करने, और जिस तरह वो लोग एक्साइटेड थे और उनको जितनी खुशी थी पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और वो काफ़ी होपफुल भी थे कि वो सीरीज़ जीतें और अच्छा परफॉर्म करें और टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दें. और माशाल्लाह से जिस तरह परफॉर्म कर रही है टीम, वो नज़र भी आ रहा है. जिस तरह उनकी एफर्ट्स हैं, एनर्जी है, सब अप टू द मार्क है. और उस लेवल पे, जिस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं, जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑसम. एब्सोल्युटली. और ज़रा थोड़ा फिटनेस के बारे में बात करेंगे और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत एम्फेसिस है पाकिस्तान मेन टीम के बारे में भी. आपका अपना भी ये मानना है, मेंटोर वहाब रियाज का भी यही मानना है. तो इस लेवल पे भी उसको आप अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल. सर मसरूर जो इनके हेड कोच हैं, उनको ये चीज़ पता है कि हम लोग की फ़िटनेस इम्प्रूव जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहाँ फ़िटनेस बहुत ग्रो कर गई है. तो अगर उस चीज़ को देख के अभी यहाँ पे देखें तो लड़कियाँ काफ़ी एनर्जेटिक दिख रही हैं और
अंडर 19 लेवल पे इस तरह की फिटनेस होना और ये लोग और इम्प्रूव करेंगे और अच्छे होंगे तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट होगा, इवन पाकिस्तान के लिए भी और टीम के लिए, इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप उस दिन भी आई थी कैंप में इनके, आपने काफ़ी नज़र रखी हुई है, आज भी आप देख रही है मैच काफ़ी गौर से, तो आप नज़र रखी हुई है प्लेयर्स के ऊपर। आई नो बहुत जल्दी है इन प्लेयर्स के लिए भी, अंडर 19 है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए नज़रें हैं कि किसी प्लेयर के ऊपर? बिल्कुल, जब मैंने अंडर 19 की टीम देखी थी, स्पेशली मैं अगर मेंशन करूं कि मुझे इनमें 2-3 प्लेयर्स पसंद भी हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी और एक्शन, जिस तरह वो मानूर जेब बॉलिंग है, शेरबानो की हार्ड हिटिंग है, तो आई थिंक जिस तरह के ये लोग बैटर्स हैं, इनके पास रावेल जिस तरह आज खेली है, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, तो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ें हैं सीरीज़ में, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो और आपको खुशी होती है कि लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं और वो पाकिस्तान को इस तरह की एनर्जी शो कर रही हैं, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो फ्यूचर स्टार्स हैं वो रेडी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह पे रेडी हो रहे हैं, बेफिक्र रहिए। ज़रा थोड़ा बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटमेंट रही परफॉर्मेंस, उसके बारे में हम अभी इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे। एज अ कैप्टन या वहाँ से भी बात हो, एज अ मेंटोर, आप क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है, कैसे उठाते हैं ऐसी परफॉर्मेंस से टीम को, कैसे मोराल को वापस लेके आना है, इस बारे में बात होती है? काफ़ी मतलब इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि अभी वर्ल्ड कप के बाद जो अभी हम लोग कैंप्स में हैं और जो कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी सीरीज से श्रीलंका से तो एक टीम बिल्डिंग करें, और जो चीज़ हमने लैक की है पूरे वर्ल्ड कप में, चाहे वो प्रेशर सिचुएशंस हो या चाहे वो स्ट्राइक रोटेशन हो या कॉन्फिडेंस हो, वो हम लोग गेन करें एज प्लेयर्स। और ये सीरीज़ हमारे लिए इस तरह भी पॉजिटिव होगी क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ वर्ल्ड कप में जो इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए वो हम लोग यहाँ पे लाएं और अपनी टीम को टीम बिल्डिंग करते हुए और इम्प्रूव करें। जब बातों में मौका एक जरूर आया था, देखिए कप्तान आपकी कमेंट्री में आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, मैसेज हम यहाँ से प्लेयर्स को दे रहे हैं, क्यों कैप्टन? बिल्कुल, फील्डिंग तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है कि हम लोग को इम्प्रूव करनी है, और जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जिस तरह की अब इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिंग हो रही है तो हमें भी उसको करने के लिए टॉप पे आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ बिल्कुल आप बिल्कुल एक सही जो सिमत है उसकी तरफ अगर हम बात करें तो क्या इज दिस द वे फॉरवर्ड कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे फिटनेस के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर? फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना तो मेरी बहुत पुरानी ही साइन है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तभी आप रिएक्ट कर सकते हो ग्राउंड में। तो कोशिश यही है कि अब जितनी भी लड़कियां आएँ उनको मैसेज क्लियर हो कि फ़िटनेस इम्प्रूव करें और फिटनेस पे जितना ज़्यादा काम करें उतना अच्छा है, क्योंकि स्किल और परफॉर्मेंस तभी बेहतर होती है जब फिटनेस अच्छी होती है। तो लड़कियों को मैसेज है, इंशाल्लाह वो इम्प्रूव करेंगी। जरा कुछ आपसे पर्सनल पूछते हैं कि बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आप इस वक्त जब आप दुनिया भर की क्रिकेट टीम से खेलते हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स को देखते हैं, तो आपको किस प्लेयर से ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है कि यार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स डेवलप हों? पर्सनली बात करूं तो एलिस पेरी, मैडिसन कैब, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने अपने बचपन से देखा और स्टिल उनके साथ खेला भी है, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हों चाहे वो साउथ अफ्रीका के लिए हों, तो उन्होंने वो प्रूव किया है कि आप एज अ सीनियर प्लेयर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक जो उनकी गेम अवेयरनेस और एथिक्स हैं वो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी टीम्स को देखने चाहिए। क्या अलग करती हैं वैसे, जाते जाते अगर हमारे सुनने वालों से बात, क्या अलग उनकी, क्या प्रैक्टिस अलग होती है, उनकी रूटीन अलग होती है, या जस्ट स्ट्रक्चर जो उनका अलग है? स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो तो डिफरेंट है ही। दोनों टीम्स ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चर फुल मेंटेन स्ट्रक्चर है, बट ये है कि उनके अपने भी माइंडसेट डेवलप हुए हैं उसी तरह से, क्योंकि उनकी जो टीम है उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उनसे। और अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हमें माइंडसेट और बेहतर करना है और पॉजिटिव होना है, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है वो हमें अभी ग्रो लेवल पे लेके जानी है। तो आई थिंक एज अ डेवलपमेंट स्क्वाड हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को जितना सेल्फ बिलीफ में स्ट्रॉन्ग करें और माइंडसेट बेहतर करें, वो एक पॉजिटिव होगा। क्या आपको हैरत हुई थी कि जितना पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को लोग सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गए हैं, जो जितना वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप जो ये देखा गया है विमेंस का, इससे पहले पाकिस्तान में इतना नहीं देखा गया?
बिल्कुल क्योंकि हम खुद भी हैरान थे कि इतने लोग देख रहे हैं और अच्छी बट एक अच्छा साइन ये कि वुमेन्स क्रिकेट को अब लोग देखने शुरू हुए हैं। पहले हम देखते थे कि सिर्फ दूसरी ही टीमों को देखते थे, बट इस बार जिस तरह पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट मिली और लोगों ने देखा, और मेरी तो पर्सनली भी ख्वाहिश यही है कि सब देखें और सब सपोर्ट करें ताकि ये टीम जो आज स्ट्रगल कर रही है वो आगे जाके बड़ी सी बड़ी टीमों को हराए। तो क्या यही मैसेज आप देंगे कि लोगों को कि जरा पाकिस्तान की ग्रोथ को देखें एंड देन ओपिनियन कायम करें पाकिस्तान वुमेन्स टीम को लेके? बिल्कुल, काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं वुमेन्स टीम में, क्योंकि जो कल्चरल इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि हम लोग जितना आगे आ चुके हैं हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट दें, बट स्टिल जितने भी लोग हैं सबसे एक्सपेक्टेशंस और ये सारी चीज़ें भी हमारी भी पर्सनली यही हैं कि वो सपोर्ट करें। जितना वो वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे उतना ही टीम ग्रो करेगी, क्योंकि इन दी एंड कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है, चाहे वो कहीं से भी हो, इवन फैंस का हो या जो लोग देख रहे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है उनका हो। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बूस्ट करती हैं। इवन 2028 में वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में हो रहा है वुमेन्स का, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारा भी होम ग्राउंड हो तो पूरा क्राउड भरा हुआ। जिस तरह हम अभी यूके में खेल रहे थे तो फुल क्राउड था, तो आई होप सो कि हमारी भी वही चीज़ें हों। अच्छा पॉइंट आपने दिया कि क्या डिफरेंस होता है जब आप ऐसे फुल हाउस में खेलते हैं, क्योंकि हम अभी जिम्बाब्वे से भी यहाँ सीरीज देखी, इससे पहले साउथ अफ्रीका भी देखी, ज़्यादा लोग सपोर्ट करने आते नहीं है ग्राउंड में। तो जब आप फुल हाउस में खेलते हैं तो उसका क्या जज्बा होता है या उसकी क्या फीलिंग होती है? आई थिंक मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे क्राउड में खेलने से बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप कोई हिट भी मारो आउट भी करो तो क्राउड का जो शोर होता है, चाहे वो शोर हो या साइलेंट हो, वो दोनों ही मज़ेदार होता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो वो साइलेंट भी होता है दूसरी टीम के लिए, और अच्छा ये चीज़ अच्छी है कि वो चलता जाए। फातिमा, विकेट एक और गिर गई है, पाकिस्तान ने एक और विकेट हासिल कर ली है। ये छठी विकेट गिरी है साउथ अफ्रीका की। वैन वेक बड़ी हिट लगाने के, इनफैक्ट मियाँ थी जो बड़ी हिट लगाने की वजह से अपनी विकेट गवा बैठी हैं। मैं चाहता हूँ आप डिस्क्राइब कीजिए इस बॉल को भी और इस कैच को भी, बीइंग अ कमेंटेटर। आज फातिमा सना द कमेंटेटर है हमारे साथ अब। बिल्कुल, शॉट उसने फुली खेला था, बट ये है कि बाउंड्री पे आउट हुई और काफ़ी क्लोज थी बाउंड्री। अच्छा शॉट भी था, लेकिन बॉल भी उतनी ही अच्छी थी, लेकिन कैच भी अच्छा था। मैंने बनाए 4 रन। फातिमा द कमेंटेटर अब हमारे साथ हैं अगले एक ओवर के लिए। पिछे साउथ अफ्रीका काफ़ी मुश्किलात में है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस पर्पस के साथ आया था, जिस एनर्जी के साथ आया था, वो अलग थी। क्योंकि पाकिस्तान टीम की ये बात रही है कि जब भी आप पहला ओवर या दूसरा ओवर देखते हैं, जो एनर्जी दिखाते हैं आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेलने वाला है। मेलिसा वैन नई आने वाली बैटर है, एक बहुत मुश्किल मरहले पे आई है अपनी टीम के लिए। एक पार्टनरशिप भी दरकार है, बड़े रन्स, तेज़ रन्स भी करने हैं, और कमेंटेटर भी हमारे पास नए हैं, तो देखना है कि अब ये जो हमारे नए कमेंटेटर हैं कैसे बयान करते हैं। फातिमा कमेंटेटर, हम जिस तरह इन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी और जिस तरह इनका बॉलिंग एक्शन है, आई थिंक शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस तरह वो परफॉर्म करी है लास्ट मैच में, इस मैच में, आई थिंक यही टाइम है जिस टाइम पे पाकिस्तान टीम जीत के टाइम में है। तो अच्छा साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इस तरह के बॉलर्स अब आए, और जिस तरह स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग करी उनको देख के भी अच्छा लगा, क्योंकि यंग टैलेंट है और कॉन्फिडेंस में है, एनर्जेटिक है, तो आई थिंक अच्छा साइन है। सना द कमेंटेटर, कैप्टन नहीं है। चलिए वापस एक बार एक कैप्टनसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। अंडर 19 लड़के हैं, आप क्या समझते हैं कि कब ये तैयार होते हैं, कब इनको अगले स्टेप की तरफ जाना चाहिए, अभी इनको इस लेवल पे और खेलना चाहिए, या आप कहते हैं कि काफ़ी लोग अगले स्टेप के लिए रेडी होते हैं इस लेवल पे? अगर मैं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करूं, लड़कियां रेडी होती हैं इस लेवल पे, बट अगर मैं पाकिस्तान स्ट्रक्चर की बात करूं तो आई थिंक स्टिल इनको अभी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, ताकि जितना अच्छा पूरा तैयार होकर पाकिस्तान टीम में आएंगे तो आई थिंक एज अ मैच विनर आएंगे। तो अब भी उनका इंडिविजुअल फोकस यही होना चाहिए कि वो जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना अपने गेम को एंजॉय कर सकते हैं करें, और जब वो पाकिस्तान के लिए खेलें तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन और जो टीम की एक्सपेक्टेशन हो वो पूरी कर सकें।
36 बॉल पे 60 रन चाहिए और आई थिंक अभी तक तो पाकिस्तान के हाथ में मैच है और कोशिश यही है महानूर की कि वो इस विकेट को भी ले सके और वो काफ़ी आई थिंक 2 आउट भी कर चुकी है। तो एक अच्छा चल रहा है तीनों फास्ट बॉलर्स का। तीनों लेफ्ट आर्मर हैं, तीनों क्विक भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं और तीनों आई थिंक तीनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है, एक दूसरे को बताते भी रहते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि तीनों बहुत दिलेर हैं, ये घबराती नहीं है, फ्लोटर फेंकने से आगे से बॉल को स्विंग करने का पूरा मौका देती हैं। अब आई थिंक स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं तो जिस तरह इन लोगों ने स्विंग और आगे से बॉल किया है और इनको विकेट्स भी इसीलिए मिली हैं क्योंकि वो ब्रेवरी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि ये मुझे मार देंगे। वो इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि वो चाह रहे हैं कि वो मारे और इनको विकेट मिले। तो ये अच्छा है इन तीनों फास्ट बॉलर्स का कि वो ब्रेव हैं और उनको इस चीज़ का डर नहीं है कि मुझे कोई मार लेगा या कुछ इस तरह। तो आई थिंक अच्छा जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छा जा रहे हैं एज अ कमेंटेटर। मुझे लगता है कि पहले से ही अब जो आफ्टर क्रिकेट की जो तैयारी है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बल्कि तैयारी शुरू होगी। एक बार फिर हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर है बॉल, एक ही रन बनेगा। तो फातिमा सना 126 रन आपको लगा कि, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे पहले कि 104 रन आपने पहले मैच में बनाए, 126, तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखनी चाहिए, वो जो आपने जितनी भी एफर्ट की है वो इम्प्रूवमेंट में रिजल्ट्स में सामने आनी चाहिए। जिस तरह रावेल ने बैटिंग करी है आज वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो एंड तक गई और उसने जिस तरह एंड में एग्जीक्यूट भी किए शॉट्स और फील्डर्स भी पीछे थे, उसके बाद भी उसकी ब्रेवरी थी कि वो उठा के मार दे और वो 6 भी हुए। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस लेवल पे लड़कियां स्ट्रांग हैं और वो ये चीज़ सोच रही हैं कि हम लोग एक अच्छा चांस था फील्डर का बट गया 4 के लिए, लेकिन बॉल भी उसने स्टिल वही की थी आ गई। एक अच्छी चीज़ थी कि ये डाइव भी मारी उसने, स्टिल रन्स काफ़ी हैं, अच्छा हम लोग अभी भी रोक सकते हैं। बाद में मुझे मत कहिएगा कि कैप्टन कमेंट्री करें और आपको फील्डिंग अपनी बेहतर करनी है। अच्छी एफर्ट थी, हम ये कहेंगे, कोशिश बहुत अच्छी थी। शायद कैप्टन का प्रेशर है कि वो कमेंट्री में, शायद उनको पता है कि कैप्टन कमेंट्री में बैठी है। नहीं, होप सो लड़कियों को नहीं पता होगा वो अभी इस टाइम पे बहुत फोकस है अपनी गेम को लेके और अगेन शॉट पड़ा और आई थिंक इस टाइम यही टाइम है जिस टाइम पे हमारी टीम को और ज़्यादा चैलेंज लेना है क्योंकि इस टाइम पे जो रन्स होते हैं वो काफ़ी लीग होते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो बॉलर हो। इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा कोशिश करे कि इस टाइम पे कंटेन करे क्योंकि जितनी डॉट्स बॉल होंगी उतना ही प्रेशर सामने वाली टीम पे बिल्ड होगा। एब्सोल्युटली। तो फातिमा जाते जाते ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सीरीज। उसके बाद एशियन गेम्स भी हैं तो उनके लिए भी, और इनफैक्ट पूरे साल के लिए ऑल द बेस्ट। आप 100 खेलने जा रही हैं, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएँ और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ कमेंट्री में आए। थैंक यू सो मच। मैंने भी इंजॉय किया और स्टिल अगेन आउट कर दिया और मेरी ये फेवरेट बॉलर भी है और जिस तरह ये विकेट ले रही है तो इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। चलिए ज़ेब, ये तो पता लग गया कि आप कैप्टन फातिमा सना की फेवरेट बॉलर बन गई क्योंकि आपने बॉलिंग बहुत अच्छी की, आपने कंसिस्टेंटली लाइन लेंथ स्विंग का इस्तेमाल किया है, डिसिप्लिन दिखाया है और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। एक बार फिर देखिए, विद इन द स्टंप्स बॉल, ये सबसे बड़ी की है कि आप स्टंप्स के अंदर बॉल करते हैं। जितने भी अच्छा साइन ये भी है कि इन्होंने जितने स्टंप्स में बॉल किए हैं इनके बोल्ड भी हुए हैं और इनको इस चीज़ का पॉजिटिव साइन भी मिला है क्योंकि जितना आप स्टंप्स में बॉल करोगे उतना फ़ायदा है और जिस तरह ये लड़कियां अच्छा कर रही हैं, होप्स हो कि इन लोग का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गेन होता जाए। एब्सोल्युटली। एशले वैन ने बनाए 13 रन, 75 रन, 7 विकेट गवा के पाकिस्तान डेफिनेटली ऑन टॉप। Thanks a lot, Ali Yunus and Fatima Sana. Fatima Sana sharing her precious thoughts with us. 75 for 7, the South Africans. This one is driven away, but straight up into the covers where it is stopped. Malaysia is on 2. DTP yet to get off the mark and yet to face the ball. We are in the over number 16th. Pakistani girls holding the ascendancy at the moment.
South Africa not only have lost 7 of their wickets, but also their run rate is not good enough. So Pakistan holding the ascendancy by big time, and that was a beauty of a ball which went through the defenses of the batter. There you watch that. That was a terrific ball. So that is a terrific comeback by the Pakistan under-19s women after losing the first game. That one turned away a little bit. And I've got FS Malik alongside. FS, good evening again. Tremendous performance by the Pakistani girls. Yeah, good evening, Rana Shfaq. Good evening, viewers. It has been one impressive performance, and look at the joy. Absolutely. They bossed the game in all the departments. First, they batted beautifully well. And then they bowled terrifically well. Their fielding was on the high standard as well. There you see the Masroor, the coach of the Pakistan Women under-19. So far, they have outsmarted South Africa. Although, I don't want to pass any verdict. South Africans still can win it. 25 deliveries are still left, and they've got to make 50 runs for the victory. But at the moment, Pakistan is on the driving seat. Oh, well bowled again. Well bowled again. She didn't know much about that one, and she will not want to know anything about that one either. 16 overs have been bowled. South Africa suffering 76 for 7. And take a look at this dugout and the outside scenes from our drone camera of the South African under-19 team. So it has been very impressive performance by the Pakistani girls. The University of Lahore, one of our proud sponsors in this Pakistan and South African Women Under-19 series, bilateral series. For the first time ever in the history, South African girls are visiting. She has been very impressive. The bowler which is operating at the moment, Mahanur, bowled terrifically well. Every batter came and struggled against her. Rivaj, one of our sponsors, Lahore University presents Rivaj, Pakistan under-19 versus South African under-19. That one pitched up as well. Wicketkeeper had to do the job. I like the approach of the Pakistan left-arm bowlers, because they've really bowled full and used the angle to good effect. Pepsi, another sponsors of this series. She is pitching the ball up. She is looking to get batters out, which is always good to see from a young girl. That was the last ball. Again pitched it up. Batter was going on to the front foot, trying to drive it through the offside, but not making any contact. As ball skidded away and swung away a little bit. There you see, bit gloomy faces in the dugout of South African management and the dugout. Again, she's pitched it up, and they are appealing. They are appealing for the stumping or for the run out. Will it be referred to the television umpire or not? Let's see. A lady umpire is on your screen. Yes, it has been referred. It was a vociferous appeal by the Pakistani girls, and the umpire has sent it upstairs. It was for the run out. Yeah, it has been a very good, impressive performance by the Pakistan girls, but I wonder if South African girls have a sting in their tail
at this point in time, do they have one or two pinch hitters who could get them out of this situation? It doesn't look like at the moment. Although South Africa have the full complement of 6 batters or 7 batters, but none of these batters have been impressive tonight. It is Pakistan who dominated them. We are still waiting for the replay, and here it comes. Wicketkeeper underarmed it, and then they appealed rather vociferously. That's why umpire referred it to the television umpire. All are await. 126 is the target. Although I felt at the innings break FS that Pakistan was short of 15-20 runs. At one stage it looked that Pakistan would make 140, 150 at least. But South African bowled particularly well in the middle part of their innings. But the way Pakistan started their bowling and the way they fielded, that is appreciable by any means, by any angle. Absolutely right. I thought the same way as well, because in the latter part of the innings, South African girls put the brakes on and really bowled splendidly well. Take a look at that again. This is how it happened. Underarmed it onto the stumps, and a side-on angle will give us a better idea, or the umpire, the TV umpire who is about to adjudicate this decision. There we watch that again. I think she dragged her bat back into the crease in the nick of the time. Yeah, I can tell you that. Not only the bat was grounded, but also the bat was inside the crease when bails got dislodged from their grooves. So I think it has to be a not out. Our director showing it all the angles and is doing a terrific job. And there you watch, not out on your screen, and it is also on the giant screen. There are 2 giant screens. One is at deep square leg from that end, and one is at the deep extra covers boundary. I tell you what, Rana Shfaq, there are dozens of eyes in the middle, and a minute before they were all focusing on these giant screens. Absolutely, Abbas. Outside the off stump, she had a real go at that one, but again, she did not make any contact. So Pakistan is becoming a hot favorite to win this match, to level the series. Having said that all, how South African girls bowled in the death overs, we should give credit to the Pakistan bowlers as well, the way they started in the second innings. No doubt about that. She improvised, but straight into the hands, and what a catch! She brought off an absolute stunner. As we were talking about the fielding and the bowling of the Pakistani girls, every department looked covered tonight. What a beauty of a catch. I thought for a while that she would be able to clear the girl at short fine leg, but she brought off a stunner, plucked that one from the air. Now take a look at that from the side-on angle. It was always going away from her, running backwards, never easy, but she really has brought off a stunner. Took a beauty at short fine to remove the second goal of the South African under-19 side. Have a look at that again. No problem with the front foot, and out is the call. So Melissa makes her way back to the dugout. She's out, courtesy of a brilliant catch. Pakistan got the wicket in the first over, and then they kept taking wickets
And South Africa kept losing wickets, and they have lost as many as 8 wickets so far in 17 overs. 48 needed in 18 deliveries with only 2 wickets in the tact. Mabasa has come out to bat, and she needs to farm the bowling right from the word score. Oh, there you go. There you go. Pakistani girls are all over South African girls here in National Bank Cricket Stadium, Karachi. South Africa's wickets are tumbling and tumbling like 9 of the 10 pins. Absolutely. Respect. Mabasa doesn't get any respect by the Pakistan girls. She was just coming down the track and was foxed first by the bowler, and then wicketkeeper did the rest. Have a look at that. This is the side-on angle, the left armer. No problem with the front foot, as you can expect, especially when the spinners are in operation. And she dislodged the bails in no time. There you go. South African women are going off. It means it's a victory for Pakistan, and they have leveled the series by winning this one. Terrific, terrific performance by the Pakistani girls. Well done, girls. South African girls now coming out to shake hands with the Pakistani girls. Pakistan dominated this match right from the word score. South Africa's captain winning the toss and electing to bowl first. And Pakistan started off nicely. They put up about 60 or 64 runs for the opening wicket stand. And then they scored 125 in their allotted 20 overs. But the way they bowled, the way they fielded, it is absolutely magnificent, FS. And South Africa never looked comfortable tonight. Absolutely great performance by the Pakistani girls, as we can see the players shaking hands with each other. Pakistan girls winning this match by a big margin of 47 runs. Lost the first game by 4 wickets, and even a better way to make a comeback in the second match. Now 1 each in the series, and it has become more spicy after this second match, the series. No doubt about that. The third match will be held on the 19th of this month, and then fourth will be played on 22 of July, and the final match will be held on 24 of this month. There you see. Happy management, happy girls, tremendous performances. Rovel scored fantastic 64 not out. Then Mahanur bowled splendidly well, and there were a few other big and great performances as well. There you watch them. There you watch them. South African girls in a hurdle by taking knees at the moment. They've lost this game, but they have plenty of things to do better in the next game. 20 scored by Rensburg, 16 were made by the captain, and Wenwick scored 13. No one other could make it to the double figure. It's a sorry looking batting card for the South Africa, and there were 8 extras as well, and they bundled out or skittled out for 78 in 17.1 over, and Pakistan won that match by a big margin of 47 runs. Take a look at the Pakistani bowling card. Zaib took 3 wickets, pick of the bowlers, and a wicket for Sharbano as well at the top. Mahanur and Maham chipped in with a couple of wickets apiece. They've been very impressive, all of these girls. 8 runs were extras, and South African girls were bundled out for 78. That's how South African girls started their innings, and Pakistan straight away started to take wickets. That was one hell of a good shot. She picked that one away. Then she got bowled in a beauty. That was a good shot.
towards the deep covers boundary. Width was there and she put that away. Oh, that was a beauty from Manu. She yorked her. Another wicket going down. Ah, look at the joy she had. That was played gently. They were going through for run and direct hit saw her off. That was in the air for a long, long time. Fielder came under the ball and grabbed that. That was 4. That was a good shot as well. Oh, she didn't know anything about that one. She didn't know anything about that one. She tried to improvise, but she got caught at fine leg. Oh, she didn't have the time to get back into the crease. There you see the match summary. Pakistan scored 125 in their allotted 20 overs. Sohail scored 68 of 64 deliveries. Komal scored 23 and Zafisha chipped in with 11. Mia, Wenwick and Devadi shared 1 wicket each. South African women struggled throughout their innings. They bundled out for 78 in 17.1 over. Rensburg scored 20. Voorst scored 16 and Wenwick getting 13. Zabe picked up 3 wickets. Mahanur and Maham shared a couple of wickets each. Pakistan under 19 won that match by a good margin of 47 runs. And now we are throwing it to the Zishan, our fellow commentator, for the post-match presentation. All right, it's time for the post-match presentation ceremony of the second match of University of Lahore presents Rivaj Under-19 Women's T20 International Series between Pakistan and the South African team. And we saw a brilliant all-round performance from the home team, both with the bat as well as with the ball, as they squared the series 1-all by winning this game by a decent margin of 47 runs today. Before I introduce who the player of the match is, I've got to introduce the guest with us. He is Mr. Imran Farad, the batting coach of the Pakistan women's national team. And now the player of the match because of her brilliant performance with the bat and unbeaten 68 of just 64 deliveries. It's Ravel Farhan, who is a judge as a player of the match. She will collect her trophy from Mr. Imran Farad, former test opener, as well as the head coach of Pakistan national women's team. Ravel, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस विद द बैट. एक अच्छी इनिंग्स आज आपने खेली. इनिंग्स के आगाज से इनिंग्स के ख़त्म तक आप खड़ी रही. क्या मैसेज डग आउट की तरफ से आपके लिए? मुझे मेरे कोचेस की तरफ से बहुत सपोर्ट थी. उन्होंने मुझे बहुत बैक किया और हमारे बहुत से कैंप्स लगे और उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मेरे कोचेस ने मेरे पे बिलीव किया और आज मुझे खुद पे भी बिलीव था और इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया. पावरप्ले में हमने आपकी स्ट्रैटेजी देखी. आपने ज़्यादातर रन्स बाउंड्रीज के जरिए हासिल किए, फिर आपने स्ट्राइक रोटेशन पे निसार किया. एंड द वे यू फिनिश विद द 6 and a 4 ऑफ द लास्ट बॉल, दैट वाज ब्रिलियंट. सो डू यू थिंक कि 126 वाज इनफ ऑन दिस पिच? नो, इससे ज़्यादा हो सकता था. कुछ डॉट्स हमने किए हैं बट अगले मैच में इंशाल्लाह वो वेल करेंगे और बस इस तरह टारगेट मिलेगा. वेल बैटेड रावेल, आपने स्कोर एक ऑल से बराबर कर दिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम. थैंक यू सो मच. That was Ravel Farhan, the player of the match for today's match. And that's it from the presentation ceremony. It's time for us to take a short break.
brilliant performance. What a brilliant comeback from Team Pakistan as they beat the visitors South African under 19 side by 46 runs to make a comeback in this series. तो हमने सोचा क्यों ना कप्तान से बात की जाए क्योंकि पहले बात हुई नहीं थी मैच जीतने के बाद क्योंकि मैच जीतने की खुशी है वो अलग होती है. तो आप देख सकते हैं कि जो स्माइल भी है फिजा फयाज जो कि पाकिस्तान की कैप्टन है, एक स्माइल विजिबल है. उनसे जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है फिजा. सबसे पहले तो मुबारक हो आपको. कितनी इंपॉर्टेंट है ये जीत आपके लिए और आपकी टीम के लिए कम बैक करना इस सीरीज़ में? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. देखें जीत हमेशा बहुत मतलब ख़ासतौर पे होम ग्राउंड में बहुत स्पेशल होती है और द वे वी केम बैक पहला मैच हार के आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और ख़ासतौर पे होम सीरीज़ पहली बार जब हो रही है तो उसमें एक प्रेशर था होम सीरीज़ का जिसकी वजह से प्रॉबेबली हम नहीं पहला मैच जीत सके. बट आई थिंक ये हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत मिली है. आज के प्लान की थोड़ी बात करते हैं. आप एक डिफरेंट मकसद से आए थे जैसे आपके ओपनर्स खेले क्योंकि पहले मैच में 3 विकेट जल्दी गंवा दी थी. आज स्पेशल प्लान दिया था ओपनर्स को कि लंबा खेलना है. जी देखें प्लान हमेशा सेम ही होता है बैटर्स के लिए कि लंबा लेके चलेंगे. जितना देखें रावेल ने स्टे किया विकेट पे उसने माशाल्लाह 60s में वो गई है. तो इसी तरह सारे बैटर्स के लिए जो जितना लंबा लेके चलेंगे उतना सब टीम के लिए अच्छा होगा और उनके लिए खुद भी अच्छा. I'll come back to you क्योंकि बॉलिंग प्लान्स भी आपसे जानना है. I'd like to talk to the South African captain also, Mieke Voorst. Hard luck. In the previous game you had a good performance. It seems like the bowlers probably weren't up to the mark in this game. Do you think that? I think firstly, well done to Pakistan. I think they played really well. I don't think it was like they were not up to the mark. I think there was just a bad ball here or there, and the Pakistan batters capitalized on that. I think it's just like this showed us where there's gaps in the team, and that's also really good because now we know what to reflect on and what to come back on. In the first game, the new ball bowlers were brilliant. The length was brilliant. Do you think today, in this game, the length was on a shorter side when they started off the inning? I think maybe the first over 2 it was a bit short, but after then we were missing full. So I think just from our bowlers, just to get it back, get that blend back. We know what it is that is working. We found that in the first game. It's just how to find that more consistently. I got to ask you about the conditions here in Karachi. This was the second surface that you played on. How you found the conditions here? I think it's really good conditions. Obviously, it is a lot hotter than to what we are used to, but it's been a good batting deck both games. I think it's just we maybe as batters didn't bat that well on it, but I think there's definitely some good scores and a lot of runs in these pitches. I hope that's not the case, that if you're comparing these surfaces to the surfaces back home, there's a little less bounce than you used to have in South Africa. Yes, there's definitely a little less bounce and also more like skiddy bounce. It's good for the series that it's level. What can we expect from the next game? I think it's really good that the series is level. It shows that the teams are up to standard and that we're competing and both learning ahead of the World Cup. But I think you can definitely expect us to come back with a bang. The girls is definitely excited to for the rest of the games. Yeah, if I ask you just to sum up this game for yourself, where did you lose it actually? Just sum it up for us, please. I don't think there's a specific moment we lost it. It was like lost in pieces. But I think if we can just tidy up those pieces, we'll be good. Absolutely. Coming back to Fizza again. Fizza, थोड़ा bowling plan के बारे में बात करते हैं. आज जो bowling और fielding में energy थी, आज क्या मैसेज दिया था, कितना सख्त मैसेज दिया था कि आज एनर्जी अलग लग रही थी. देखें बॉलर्स जो हैं हमारे उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक वो प्रेशर गेम की वजह से पहले मैच में हम वो नहीं कर सके उस तरह. लेकिन वही प्लान सिमिलर प्लान एंड आई थिंक वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया. दैट्स व्हाई हमें वो सक्सेस मिली है उसमें. तो नथिंग डिफरेंट. एक स्पेशल प्लान तो था कि आपने दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया. सरफेस को देखते हुए या अपोनेंट्स को देखते हुए ये फैसला किया? देखिए दोनों चीज़ों को देख के करना पड़ता है, तो इसलिए हमें था कि अगर हम पेसर्स से जाएं तो इट वुड बी ग्रेट. ग्रेट, एब्सोल्युटली. अगेन सीरीज लेवल, व्हाट टू एक्सपेक्ट आपसे अगले आने वाले मैचेस में? देखें जी इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू like play a good game and let's see inshallah जीतने की उम्मीद है. इंशाल्लाह जीतेंगे. अच्छी गेम खेलेंगे. What we want to see is good cricket. Thank you very much, captains. Thank you, man. Thank you, Fizza. Thank you. That is all we have at the moment from here. The action will return. We have a break tomorrow. The action will return on 19th, same time, same ground, same lovely city. See you then.